Testimony of Science and Technology, Empowerment of the Community. As it is a tradition to showcase glimpses of previous session, the previous session was held on 18th August on the theme Integrated Community Resilience. Before moving forward to the today's session, we first discuss the showcase you the PPT of the previous session. In previous session, we have discussed Technology 1, nursery business based on seasonal crops. Sugarcane and cotton are important cash crops that contribute to national economy. RT, Advanced Rural Technology Intervention, introduced its nursery technology to sugarcane growing farmers when commonly grown sugarcane variety CO 740 got affected by yellow mosaic virus and black shoot disease and its productivity decreased. For the tech developer of this technology is Mr. R.D. Deshmukh, President of RT Fulton, Maharashtra. He said that they developed following technologies in this under this technology. Number one, high humidity chamber for rooting of cuttings, leaf as propagule, rooted cutting miniature, flowering and fruiting trees. Sugarcane nursery, low cost greenhouse, nutrient flow system, production of root mat. Aarti has well established infrastructure for training and live demonstrations. It also has working models for all technology and training kits are also available in their center. The chain maker for this technology is Sri Ramakant Narayan Prabhune, Aarti Fulton, Maharashtra. To combat the problem of CO 740 variety sugarcane crops which is affected by yellow mosaic virus and black shoot disease, National Chemical Laboratory developed seedlings by tissue culture. But these plants are not well grown in the open fields. Here, Aarti did science and technology intervention in sugarcane cultivation by altering some agronomical practices. They took tissue cultured plants from NCL and grew them in their fields. Among them, they selected some vigorous plants as seed for further cultivation. They did single bud cutting instead of three bud cutting of sugarcane plants and grew them in fields. This technology has doubled the production of sugarcane. Previously, yield was 60 ton per acre, but it increased to 80 to 150 ton due to SNT intervention. Second intervention done was that they increased the spacing between plant to plant and row to row of the sugarcane plants. They previously used 12,000 to 14,000 plants per acre, but now they are using only 4,000 plants per acre and earning double income. Initially, farmers did not agree with this technology, but after several demonstrations and trials with SNT intervention in a small portion of the farmers' field, the farmers became convinced to try their technology. And because of this, they are getting high yield from the sugarcane crop. The weight of each sugarcane is 2 to 2.5 kg. They also started growing seedlings in plastic bags. They also started growing rain-fed sugarcane in Konkan region. The beneficiary for this technology is Mrs. Dhanashree Prasad Vadve, Secretary, Women's Self-Help Group. She is an early adopter of this sugarcane nursery technology. Initially, nobody was ready to buy sugarcane seedlings from her, suspecting the performance of the seedlings. So she distributed seedlings free of cost. Her husband started visiting those seedling growers sugarcane. This resulted in good yield of their crop, and the sugarcane nursery management technology became popularized among the other members of the communities and other sugarcane growers in Maharashtra. She is the motivator of all other sugarcane growers and increased her income and also of other peoples of her community.
The second technology is technology developed. That second technology discussed was technology developed for upliftment of the tribal community of Ladakh region. The tech developer for this technology is Dr. Vikas Gupta, subject matter specialist, plant protection, KVK Ladakh. Technologies developed under the SEED DST project are mushroom structure design for mushroom cultivation using zero energy. Second, commercial quality spawn production. Third, commercial formulation of biocontrol agent. Fourth, vermicompost structure for survival of worms and vermicomposting in harsh weather condition. Beneficiary of this technology are representatives from Ladakh. The first is Mrs. Sonam Angmo from village Likir, who is an entrepreneur in mushroom cultivation. She is MSc Agriculture and growing mushroom in a small room, 6 by 8 meter, and increase the production of mushroom 10 times by increasing space and earning good income after getting training from Dr. Vikas Gupta KVK. She also set up spawn production lab. She received Krisak Award from KVK Leh. She also employed two girls in her mushroom farm. Second beneficiary is Dr. Mr. Dorje Gailson from village Sarkubuchan. He is an unemployed civil engineer. He started small laboratory after getting training in KVK Leh. He is now job provider and motivator for his community. He also learned about vermicomposting. Third person is Stanjin Dorje from village Wanla. After getting training, he started his own mushroom cultivation small lab. Besides that, he also imparted training to self-help groups. He started social entrepreneurship and also worked on artificial glaciers. He got award from present governor of Meghalaya, Mr. Satyapal Malik. Fourth beneficiary is Rinchen from village Pyongyang. He is an engineer. He designed greenhouse structure for oyster mushroom. He also developed double-walled insulated structure for production of mushroom in extreme temperature condition. He is able to provide fresh mushroom throughout the year and employed many persons. He is doing commercial production of mushroom. Fifth beneficiary Lobsang Thardot from Nubra, Siachen Belt. He is also a mushroom grower and motivating others in his community. He requested for provision of greenhouse as a help and set up a small lab in his village. He is also he also got training in vermicomposting. Third technology was discussed was electronic jacquard handloom from grass weaving. Fine korai grass mat weaving is an important handicraft practice in the village Pathamadai and Veeravanallur, located in Tirunelveli district of Tamil Nadu, which having GI tag. At IIT Madras has undertaken the technology development of fine korai grass mat weaving to improve their working condition and enhance productivity and earning of this handicraft. RUTAG at IIT Madras has undertaken the technology development of fine korai grass mat weaving to improve their working condition, enhance productivity and earning of this handicraft. With SNT intervention through electronic jacquard machine, their working condition became comfortable and increased their productivity and earning through increase in design capability through application of electronic jacquard in handloom weaving. The tech developer and change maker for this technology is Dr. S. Ganeshan. Dr. S. Ganeshan had focused on setting posture problem and developed electronic jacquard machine where storage and retrieval of the design is done digitally. This SNT intervention increased productivity by 3 times and complex patterns can be woven in 3 to 6 days. Sophisticated designs with bigger size motif up to width of mat 36 inches possible in electronic jacquard machine. Using software, name and date plate could be designed by weaver. To
registered societies and 30 personals are already got training on this technology. The beneficiaries for this technology are Pathamadai Lebai Fine Mat Weavers Cooperative Production and Sales Society Limited, Pathamadai, Tamil Nadu. Second, Veeravannalur Mat Weaver Cooperative Society Limited, Veeravannalur. And third, Korai Grass Mat Weaving Society, Kilimangalam, Kerala. Saragalia Art and Craft Village, Vadakara, Kerala. After getting training on EGH, they became user of this technology. They produce 100 mats per loom per annum. During 2019, over 100 mats woven on EGH sold. Additional turnover of rupees 2 lakh design mats woven on electronic jacquard machine. This S&T intervention brought positive change in livelihood of craftsmen. Right. Today we are going to discuss the theme integrated community resilience. Under this theme, we will discuss three technologies. Technology one is spinning on amber charka, weaving on handloom ship wool shearing through machine. The tech implementer and change maker for this technology is Dr. Tofel, Assistant Professor, Government PGT College, Rajouri, Jammu and Kashmir. The beneficiaries for this technology are Mr. Imran Chaudhary, Mr. Anis Chaudhary, Mr. Jahid Ahmad, Mr. Shadiq Chaudhary, and Mr. Yashir Mahmood. The second technology we will discuss is establishment of rural nutri bakery for fulfilling nutritional requirement and income generation of tribal and rural communities. The tech developer is Dr. S.R. Azad, Madhya Pradesh Vigyan Sabha, Gyan Vigyan Parisar. And change maker is Srimati Fulvati and Kailas Malgam, Durga Self-Help Group. Srimati Sumarvati and Dinesh Dhurve Draupadi Self-Help Group. Interaction with beneficiary will be done. The beneficiaries are the representatives from Durga Self-Help Group and Draupadi Self-Help Group. The third technology of today is establishment of Coastal Fisheries Information Hub. The tech developer and change maker for this technology is Dr. R. Kiruba Shankar, scientist ICAR, CIARI, Port Blair, and the beneficiary are the representatives from the tribal community of Port Blair. At the end, we will have the roundtable discussion with the experts and other participants. Thank you, Kumkumji. On the behalf of Vigyan Prasar family, I welcome all the participants and the viewers who have joined us through our online platform for today's day 24 of Techneev. The first technology of today's session is spinning on amber charka weaving of handloom ship wool sheared through machine. And the technology is developed by Postgraduate Department of Geography, Government PG College Rajouri. Dr. Tufail Chaudhary is with us today for this first technology. Welcome, Dr. Tufail Chaudhary, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, am I audible? Yes, sir, you are very much audible, sir. So, can I share my PPT? Can I share my? Sure, sir. Are you comfortable to talk in Hindi, sir? Sorry? Are you comfortable to talk in Hindi or English, sir? Yeah, I'm very much comfortable. Okay, sure. तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने भारत के किस क्षेत्र में काम किया और किस तरीके की समस्याएं आपके उस क्षेत्र में पहले से मैम बेसिकली एक्चुअली जो मेरा रिसर्च वर्क है लाइक आई डिड माय PhD फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली and at the same time I have completed my postdoctorate from JNU too. तो मैंने गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइबल्स पे काम किया है J&K की. ये मैम J&K की थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ट्राइब है. गुज्जर एंड बकरवाल इज द थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
Gujar Bakarwal is a nomadic tribe based in the Pir Panjal and Himalayan mountains of South Asia. Gujar Bakarwal is the third largest community in the state of J&K. They constitute 8.4% of the total population of J&K as per the latest census of 2011. तो मैम इसकी basically these two nomadic communities, their primary occupation is livestock rearing. उनका पशुपालन का बेसिकली उनका काम है, भेड़ बकरी का काम है. तो 90% of them they are engaged in this sector. 90% of these tribals they are engaged. Sir, if it's possible, sir, अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे? Sure, sure. So 90% of these two tribal communities they are engaged in livestock rearing. तो इनका पशुपालन का काम है. तो मैम जो शीप से जो इनकी जो वूल है, तो वो जो इनकी जो वूल है शीप्स की, तो वो ये लोग क्या करते थे, इसको नॉमिनल रेट्स पे इसको सेल कर दिया जाता था. मतलब कोई भी आके जो है इनसे ले लेता मार्केट से आके, तो इसका कुछ वो यूज नहीं करते थे. like they sell it on 50 or 60 rupees per kg. तो ड्यूरिंग पीएचडी तो मुझे लगा कि अगर ये जो वूल है, अगर इसको कोई प्रॉपर इसका कोई यूज किया जाए, लाइक स्पिनिंग, वीविंग, ताकि इसका कोई प्रॉपर यूज हो, तो लाइक इट विल बी इकोनॉमिकली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. तो वो एक आइडिया था मेरा, जो मेरा पीएचडी के दौरान जो मैंने एक लंबा फील्ड वर्क किया इन ट्राइबल्स के साथ, तो उसी को ही मैंने एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. मैंने एक आइडिया दिया कि अगर हम क्या करते हैं कि शीप वूल को जो है हम इसकी अंबर चरखा पे स्पिनिंग करते हैं. अर्लियर दे यूज टू स्पिन इट ऑन द गांधीयन चरखा, लकड़ी वाला चरखा. तो ऑन दैट जो लकड़ी वाला चरखा है उस पे इतना क्वालिटी और क्वांटिटी जो है इतनी अच्छी नहीं रहती थी. मतलब इतनी क्वालिटी भी नहीं आती थी. जो धागा बनता था ना, जो वूल से जो धागा बनता था, उसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं रहती थी. तो उसकी क्वांटिटी भी मतलब क्वांटिटी भी इतनी कम जो है, इतनी क्वांटिटी भी इतनी नहीं बनती. तो मुझे लगा कि इफ लाइक अंबर चरखा इसको रिप्लेस किया जाए, गांधीयन जो लकड़ी वाला चरखा है, अगर इसको लकड़ी वाले चरखे को रिप्लेस करके अगर एक कोई मॉडर्न इक्विपमेंट जो है चरखा, जो लाइक अंबर चरखा का यूज किया जाए, तो उसमें क्या होगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और एज वेल एज द क्वांटिटी भी बढ़ेगी. मतलब जो धागे की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी. मतलब जो लकड़ी वाला चरखा है उस पे कोर्स टाइप का धागा निकलता था. मतलब जब वो स्पिनिंग करते थे तो वो पुराने गांधीयन चरखे से किस तरह से डिफरेंट है सर? किस तरीके की उसमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं सर? हाँ मैम, इट इज टोटली डिफरेंट. मैम उसके बेसिकली जो लकड़ी वाला चरखा था ना, उसपे वो एक ओनली वन स्पिंडल, इट इज ओनली वन स्पिंडल. तो उसपे एक ही स्पिंडल होता है. तो ये जो अंबर चरखा है 8 स्पिंडल है. मतलब 8 टाइम्स जो है वो क्वांटिटी जो है इस पे बढ़ जाती है. जो अंबर चरखा है इस पे 8 टाइम्स जो है क्वांटिटी बढ़ती है. और जो धागा निकलता है, जो यार्न निकलता है, वो भी फाइन क्वालिटी का रहता है. तो नेचुरली अगर यार्न जो है वो फाइन है, इतना कोर्स नहीं है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो हमारे बेनिफिशरीज जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. जैसे लेडीज एंड जेंट्स शॉल बना रहे हैं, स्टॉल्स बना रहे हैं, मफलर बना रहे हैं. तो जो लकड़ी वाला चरखा जो है उसमें जब स्पिनिंग होती थी, तो जो धागा वहां से निकलता था लकड़ी वाले चरखे से, तो उससे ब्लैंकेट बनाए जाते थे. मतलब वो इतना फाइन नहीं था, इतनी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रहती थी, तो उसे ब्लैंकेट ही बनाए जाते थे. वो ब्लैंकेट जो है वो मार्केट में इनको इतना ज्यादा नहीं, इनको आउटपुट मतलब इनका फायदा नहीं पाता था, और लोग इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे. तो जब मैंने फील्ड वर्क के दौरान, पीएचडी के दौरान देखा कि हाउ इट कैन बी इट कैन बी modified with the use of science and technology. तो फिर मुझे मैंने जो है ये मेरा एक आइडिया था कि इसको अंबर चरखा इसको इंस्टॉल करके, ये जो एन ओल्ड प्रैक्टिस स्पिनिंग ऑन लकड़ी वाले चरखा को इसको रिप्लेस किया जाता है विद अंबर चरखा टू इम्प्रूव द yarn as well as the finished product. तो मैडम जब हम स्पिनिंग अंबर चरखा पे जब हमने स्पिनिंग करवाई, जो yarn निकाला, जो yarn स्पिनिंग का जो धागा जो था, और उसको हमने हैंडलूम्स
हैंडलूम्स जो है, हमने 5 हैंडलूम्स जो है वो प्रोजेक्ट में परचेज की, और 5 डिफरेंट जगहों पे 5 हमने क्लस्टर विलेजेस बनाए। तो उन क्लस्टर विलेजेस में 5 जो है हमने हैंडलूम लगाई। जो धागा जो हमारा अंबर चक्का स्पिनिंग से निकलता है, तो हम हैंडलूम पे क्या करते हैं, लाइक वी यूज टू लाइक वीव इट ऑन द हैंडलूम्स। तो हम इस पे हम क्या करते हैं कि हम इस पे लेडीज एंड जेंट्स शॉल्स, अच्छा जी, उसके बाद हम इस पे मफलर जो है वो डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट्स जो है वो हम इस पे हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एक यू सी अंबर चक्का दैट मशीन ऑपरेटेड है और मैकेनिकली ऑपरेटेड है सर? नो, इट इज टोटली हैंड ऑपरेटेड। हाँ, इट इज हैंड ऑपरेटेड। आई हैव अ वीडियो, आई विल शो यू। कैन आई शेयर इट द वीडियो? श्योर सर, प्लीज। डेफिनेटली। It's my desktop. Look, who can I fetch it? नो प्रॉब्लम सर, तब तक आप ऐसे वर्बली बता सकते हैं सर, आप जो अपनी बात हमसे कह रहे थे। हाँ, तो मैडम ऐसे फिर हमने ये क्या किया कि इसमें कि जस्ट मिनट, इस पे where's the desktop? I cannot. तो मैम जो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था, it was like to find out the reasons for declining age-old handloom sector of the Gujarat Bakarwals associated with the spinning and processing of the wool, and how it could be revived with the help of modern technology like the use of ambar charkha and handloom machines for spinning. This objective focuses on the revival of hand spinning and hand woven cloths with the larger framework of Gandhian science of charkha. As many as 5 village clusters are being set up in Rajouri and Poonch districts of J&K. First at Line Thanamandi, Tehsil. Second is Khodmang in Darhal. Third is Fatehpur Gudia in Rajouri district. And the fourth one is at Saranu, Kalakot. And the fifth one is at Salwa in Mehendal, Tehsil of Poonch district. सर कितने लोग एसोसिएटेड है हर एक यूनिट में सर? हाँ, 40 जो है वो 40 जो बेनिफिशरीज हैं वो पर विलेज है, मतलब एक गांव में 40 बेनिफिशरीज है मेरे। तो सर इससे पहले जो लोग अभी एसोसिएटेड हैं मिल्स के साथ, इससे पहले उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत क्या होता था? ये उससे पहले भी वूल रियरिंग के थ्रू ही उसके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सेल करते थे? इससे पहले भी उनकी मार्केट में मार्केट में मैम ऐसा था कि जब ये लकड़ी का चरखा जो है वो इतना आउटपुट नहीं मिल पाता था लकड़ी वाले चरखे से। जो सिंपल चरखा था, जो गांधीयन चरखा, उससे इतना आउटपुट नहीं मिल पाता था। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे वो कम होता गया। हाँ, अर्लियर दे यूज टू स्पिन ऑन दिस गांधीयन चरखा। तो धीरे धीरे जो है ये इनका जो एज ओल्ड ट्रेडिशन ये जो था ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि उसमें इतना इकोनॉमिकल उनको कोई बेनिफिट भी नहीं था। तो फिर जो है ये फिर मुझे लगा कि इसको अगर हम इसको टेक्नोलॉजिकल इसको इम्प्रूव किया जाए तो अंबर चरखा का यूज किया। तो अंबर चरखा पे ये जो है ये डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते भी हैं, उनको सेल भी करते हैं। तो अभी वूलन प्रोडक्ट्स के एज यू नो लाइक J&K लाइज इन द टेम्परेट बेल्ट, क्लाइमेटिकली लाइक यहाँ का जो वेदर है लाइक इट्स लाइक वो ठंडा है, तो वूलन प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड भी रहती है। तो जो है ये 5 जो क्लस्टर विलेजेस हैं यहाँ पे जो है ये इस पे अंबर चरखा पे इसकी शीप वूल की जो स्पिनिंग करते हैं, कि वो शीप वूल भी इनको जो है वो अपनी ही भेड़ जो है लाइक दे रियर द शीप्स, और जो शीप्स की जो वूल है वो उसको दे यूज टू स्पिन ऑन दिस अंबर चरखा। तो स्पिनिंग के बाद जो यार्न बनता है वो हैंडलूम्स पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के इसको लाइक वो घर में भी यूज भी कर रहे हैं और इसको मार्केट में सेल भी करते हैं। एनएच मसूदी सर का कोई सवाल है? मसूदी सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। I'm audible, sir? Yeah, you are very much audible. You are very much audible. Okay. So I have a little query, sir, regarding this. You have replaced the technology, what you are Yes. intimating to us. Mm-hmm. What was the quantum of that produce they were having, and what was the increase in efficiency and quality which was done through the intervention? What was the quantum? Means what the kind of quantity they were producing, and
how the technology has benefited them in terms of quality and efficiency and all those things. Is there Sir, any data? Is there any data regarding that? Basically, we have tribes all over J&K, like in Bandipora, in Gandarbal, Srinagar, yeah. and other parts of the country. But they have basically, is there any that specific trade, that specific that niche area they have been provided, or some name, specific name, the quantum they are producing, how much is the income from this? You told 90% Yeah, is the 90% of people are involved livestock, this mm, production. So yeah, how much is the contribution in their livelihood security as far as this sector is concerned, and how your technology has intervened in that case? Can you please explain? yeah. Actually, na, just as earlier I told like you that this tribal community 90% of they are engaged with this livestock occupation, livestock rearing. तो जो लाइक शीप वूल है, जो शेयरिंग के बाद शीप वूल निकलती थी, लाइक दे यूज टू सेल इट टू द ट्रेडर्स फ्रॉम पंजाब। तो वो जो है नॉमिनल रेट्स पे इसको जो है वो उसको सेल कर देते थे, क्योंकि इनको लाइक दिस गांधीयन चरखा पे इसका जो है इतना क्वालिटी जो क्वांटिटी जो स्पिनिंग और जो वो इतनी नहीं थी, तो इसको बेच देते थे। फिर मैंने आई थिंक कि इसको कैसे टेक्नोलॉजिकल इसको जो है वो इम्प्रूव किया जाए, दिस बोथ द सेक्टर, दिस स्पिनिंग एज वेल एज द वीविंग। तो स्पिनिंग जो है वो जब से व्हेन लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस अंबर चरखास इन द बेनिफिशियरी विलेजेस, तो स्पिनिंग जो है वो दिस क्वांटिटी ऑफ yarn जो है, क्वालिटी जो है, इट इज मच बेटर देन द अर्लियर चरखा। तो when in the past they weave it on the khaddi, local khaddis, these are installed in the villages। तो वो उस खड्डीज पे जो है वो ब्लैंकेट ही बनता था, दे वीव ऑनली अ ब्लैंकेट। तो वो शाल का कंसेप्ट जो है, या लेडीज शाल या जेंट्स शाल है या फिर मफलर है, वो अदर वूलन प्रोडक्ट्स का जो कंसेप्ट जो है इस ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं था। बट जब से मैंने अंबर चरखा जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, अंबर चरखा जब से मैंने इन बेनिफिशियल विलेजेस में लगाया है, तो जो आई सी के जो दिस ट्राइबल कम्युनिटीज जो उस पे अच्छे से वो स्पिनिंग भी कर रहे हैं, और they after spinning, after the production of this yarn, they weave it on the handloom machines। तो वो different woolen products बनाते हैं, तो they sell it in the market। बट पहले ये नहीं था, क्योंकि स्पिनिंग और वीविंग जो है वो it was only limited for the this production of blankets only, coarse blankets। तो जो फाइन जो अभी जो है वो शॉल, वूलन शॉल्स जो है, लेडीज जेंट्स एंड अदर वूलन प्रोडक्ट जो है वो अभी वो अभी अब बन रहे हैं। तो सो आई कैन सी दिस इज द चेंज। तो सर आपने उनको मार्केट अप्रोच करने में भी कुछ हेल्प की है? जैसे उन्होंने अब ये बनाने लगे अपने एंड पे, तो वो मार्केट तक कैसे ले जाए अपने प्रोडक्ट को, इसके लिए मैम एक बेसिकली ट्राइफेड है, ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन है, ट्राइफेड। तो मैंने ट्राइफेड से मैंने क्या किया कि दिस इज द एग्जिट प्लान ना, प्रोजेक्ट से दिस इज एग्जिट प्लान। तो मैंने एक जो मेरे 5 क्लस्टर विलेजेस हैं, तो मैंने उनका एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, एक काइंड ऑफ यू कैन लाइक एनजीओ सोसाइटी बनाने की कोशिश की। तो वो सोसाइटी के थ्रू जो है आई विल रजिस्टर विद द ट्राइफेड फॉर द सेलिंग ऑफ दीज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। सर क्या आप ये चरखा हमें दिखा सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट? डेफिनेटली। Srivastava madam, can you help me how to share this? I have a video. Sir, if you just share tray button is there, you just click on that. Okay, so shall I go to desktop window or desktop window? Sir, the particular window in which that if you just open the video earlier only,
and then click on open share tray. Okay, definitely. First of all, I have to like play the video. Open it, keep Yes. it in pause position, and then sir click Yeah, on the open. definitely. Just I'm opening. Just I'm opening. Just in it, this windows. सर कितनी आमदनी हो जाती है जो 42 लोग अराउंड जो अब आपके साथ एक मिल में इंगेज्ड हैं, तो एक पर्सन की लगभग कितनी आमदनी हो जाती है सर इस? Ma'am, they used to sell it at 4 or 5,000 rupees per month. 45,000 सर per month. Yeah, per month. Ma'am, अर्लियर सर ये लोग क्या करते थे, इससे पहले ये लोग क्या काम करते थे? मैम वो भेड़ बकरी का काम ही रहता है इनका, अच्छा, इससे पशुपालन पहले का। वो लोग पशुपालन हाँ का हाँ एग्जैक्टली, बट ये था कि जो शीप वूल थी उसका कुछ यूज नहीं था। How to open it? Ma'am, there is an option entire screen, window, Chrome tab. सर Window. Okay. and then sir choose that particular window whether that video film is open. Sir, if you facing any problem, you can do it through entire screen also. अच्छा, with the entire screen. Yes, sir. No, I have played the video. Like, No, sir, it's not coming to us. If it is possible, sir, you just mail it to us. We will play it from here, sir. it's much larger. No, it is like more than 50 MB. So I don't think it will be uploaded on the email. Sir, share through window. That option is not coming. That window is not coming to you. Ma'am, this in the initial here is an option desktop window. Yes, sir. Then there are 3 options: entire screen, window, Chrome. The entire screen window, you can choose the option of window, and then in window it will ask that which particular window you want to share. Then you have to choose that video film window. Okay. And so if that particular window is not showing, then you can go for the desktop or the entire screen option as well. I'm not able to share it. So you send the link to us. We will play it from here. Link? So you mail it us through Google Drive. It will come to us, sir. No issues. Okay, definitely. Just I'm just like touching it. By the time you can share your PPT, sir. Also, Yeah, definitely. Yeah, sure. I request rest of the participants also, if you have any presentation or the video films, you can share it with us. We can play it from our side also.
No, I'm going to email the PPT as well. Yes, sir. Please share it, sir. Just a minute. सर तब तक हम लोग जानना चाहेंगे कि जो भी लोग थे वहां पे जिन्होंने अब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, अब उनके जीवन के स्तर में किस तरह का बदलाव आया है, एजुकेशन की रीच उन तक कितनी बड़ी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब का में किस तरीका का बदलाव देखने को मिला है इन लोगों के बाद, जब इन लोगों को ये टेक्नोलॉजी इन तक पहुंच पाई उसके बाद से सर। तो फेल सर। जी तो फेल सर। Sir, You've shared your presentation, sir. We will run it. yeah, it's very much like. So can you share the second slide? The second slide. Sir, is it visible to you? The presentation is shared by us. Yeah, it's visible to me. So, ma'am, these are the like number charkas. Na one of the participant asking me to show that. No, previous one. This is the number charka. This is the number charka. One of the participant was asking me like number charka. जो हमारी मैम ये जो Sir, हम your with voice- I'm doing it with the Sir, concept. your voice is breaking. Sorry. Sir, your voice is breaking. Okay. Is it okay now?
Yes, sir. Now it is. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, the previous slide. So this is the Amber Charkha, and like we are doing this with the consultancy of Central Sheep and Wool Institute, Abhikanagar, Rajasthan, with the consultancy of Professor this Dr. D.P. Shahavar, Principal Scientist, TMTC Division, CSWI, Abhikanagar. 3 options are there. जैसे dropping from rock पे click करना था. Sir, how it is different This from is the the original charkha? How it is different from the original charkha? So it is different in terms of quality of yarn and quantity. सर जो क्वालिटी है ना, द क्वालिटी ऑफ द अर्लियर चरखा जो है वो क्वालिटी जो yarn की जो धागा जो फाइबर निकला था स्पिनिंग के बाद, उसकी क्वालिटी जो वो इतनी फाइन नहीं रहती है, उसकी क्वालिटी जो है वो है, तो उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बनते थे वो इतने अच्छे नहीं बनते थे, लाइक वो हम उसमें शॉल्स जो है या फिर वूलन आइटम्स नहीं, उसमें सिर्फ ब्लैंकेट ही बन पाता था. तो इसमें ऐसा क्या किया गया है सर कि ये फाइन क्वालिटी के प्रोडक्ट में? सर इस पे जो है हमारा ये अंबर चरखा पे जो लाइक जो स्पिंडल लगा है इस पे ना, स्पिंडल जो है तो वो लाइक जो है उससे जो है कि क्वालिटी जो अच्छी आती है इसकी फाइबर की, yarn की. स्पिंडल कौन सा पार्ट है सर जो ऊपर दिख रहा है हमें? सर स्पिंडल रहा ये जो जिसपे रोविंग लगा रखा है, जिसपे धागा लगा रखा है. सर थोड़ी enlarge करके ये इमेज है क्या सर कि this is the only size of the image? मैडम है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू लाइक शेयर इट. आई हैव ए वीडियो, तो वो 127 MB का है, तो मेल करने में टाइम लग रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू शेयर इट. लाइक वो तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, और ज्यादा ही क्लियर हो जाता है. बट इफ यू आई विल ट्राई इट अगेन. नो प्रॉब्लम सर, आप प्रेजेंटेशन के साथ जब तक आगे बढ़ सकते. So training was carried out on this Amber Charkha. Under this activity, the consultants was provided by the TMTC Division, Central Sheep and Wool Research Institute of Rajasthan. So, like training and spinning of wool on Amber Charkha was organized at different locations of the project site during last year. During training, the basic knowledge of running Charkha was given by the TMTC scientists from TMTC, CSIR, Abhikanagar. The artisans are able to produce coarse yarn from mixed wool. About 10 have been trained, like they are trained as a master trainer. So वो जो master trainer जो हमने 10 जो master trainer जो है, like they are trained with the consultant CSIR या Abhikanagar. तो वो जो fellow community members को जो है वो अभी cluster villages में जो है वो सिखा रहे हैं. So this. So if you have any question, this Dr. Sahab, I have a little bit right now. I want to learn basically this thing. So अगर आप थोड़ा सा हिंदी में बोलो सर, में थोड़ा ठीक रहेगा. मुझे बताइए सर. बिल्कुल. ये सर आपको थोड़ा सा ये जो वूल का है ये कौन से ब्रीड के लिए आपने डिजाइन किया है? फॉर एग्जांपल जो लोकल हमारा ट्रेडिशनल चरखा होता था वो तो सबके लिए इट वाज बेनिफिशियल टू ऑल दैट ना, जो भी हमारे पास इसमें कौन सी ब्रीड है वहाँ पे? ये जो ब्रीड है ये कौन सी ब्रीड है जिसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है? Is there any specific that breed? And second, you were telling sir that earlier this work has not been done. Have you sir searched any data regarding this in the valley and other parts? Have you gone through the wool, जो wool का यहाँ पे जो ये processing होता है in Ladakh and other belts? Have you gone through that, and have you gone through that
research, the extension work conducted by faculty of this veterinary sciences course Kashmir. Have you seen any that paper regarding that, or you are telling that it has not been done earlier? Which I doubt. Basically, we have done lot of work on wool in late 80s and early 90s. Is work is based on this wool, local. जो सर मैंने जो वूल यूज किया है ना वो बकरवाली ब्रीड है, जो लोकल जो भेड़े हैं ना वो लाइक बकरवाली जो वो है वो वूल है बकरवाली ब्रीड की, वो की है सर। Am I audible, sir? So, sir, this Amber Chakra is specific to any particular breed of the wool? No, ma'am, it is not. It is like made for any particular, but we can spin it on the this pashmina wool या देसी wool जो है हम उस पे देसी wool पे इसकी स्पिनिंग कर सकते हैं, पश्मीना पे भी इसकी स्पिनिंग की जा सकती है। Sir, have you tried? डॉक्टर साहब का ना मासूदी साहब का कहना है, हाँ मैं ऐसा है ना जो मासूदी साहब का कहना है wool है वो पश्मीना wool। तो जो ट्राइब की जो वूल है ना शीप वूल जो है वो लोकल वूल है जी, वो देसी वूल है और ये कोर्स है, इतनी फाइन नहीं है, ये कोर्स वूल है जी। तो अब सर इससे क्या क्या बनाया जाता है? शॉल आप बता रहे थे, जैसे शॉल पहले सिर्फ ब्लैंकेट्स कंबल बनाए जाते थे सर, अब इससे हम लोग शॉल बनाते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स इससे डेवलप कर रहे हैं सर? ये शाल, जेंट्स शाल, लेडीज शाल बना रहे हैं, जेंट्स शाल बना रहे हैं, बना रहे हैं और मफलर बना रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज में हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए और आगे चल के हम जो इसमें और अच्छा कुछ और अच्छा जो है वो बनाएंगे। सर ये एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती है इसकी? सर इसकी जो कॉस्ट है वो 18,400 रुपए है सर, 18,400 रुपीज। और पुराना वाला जो वीविंग मशीन जी जो पुराना वाला चरखा था सर, उसकी क्या कॉस्ट क्या थी? सर लकड़ी वाला जो चरखा था पुराने वाला चरखा तो वो सर 1,500 2,000 में मिल जाता था, 2,000। ओके, तो इससे प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो पाता है? वो मिल जाता है जी। कोई जो बेनिफिशियरी है, जो शेफर्ड है, जो स्पिनिंग करता है, तो वो जो है जो पुराने में लाइक 100 ग्राम जो है धागा निकलता है स्पिनिंग पे, 100 ग्राम धागा, मतलब अगर वो 3-4 घंटे काम करता है 3 or 4 hours, तो वो 100 ग्राम जो है वो धागा निकाल पाता है। लेकिन अंबर चरखा पे वो एट द सेम टाइम अंबर चरखा पे वो 1 kg निकाल पाता है। सो यू कैन सी लाइक जो क्वांटिटी जो है वो कितनी जो है वो कम समय में क्वांटिटी कितनी जो है अंबर चरखा पे बढ़ जाती है। ओके। और क्वालिटी सर? क्वालिटी जो है सर, जो यार्न की जो क्वालिटी है ना, जो लकड़ी वाला चरखा है, वो जो धागा सर जो स्पिनिंग के बाद जो धागा निकलता है वो इतना फाइन नहीं होता है, मतलब वो थोड़ा सा कोर्स टाइप का धागा होगा। लेकिन जो अंबर चरखा पे स्पिनिंग के बाद जो है हम इस पे स्पिनिंग करते हैं जो धागा होता है वो फाइन होता है, मतलब जितना फाइन यार्न होगा उससे हम फाइन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर जितना जो है वो कोर्स यार्न जो है फिन प्रोडक्ट्स जो है फाइन नहीं बना सकते, वो सिर्फ ब्लैंकेट के काम ही आएगा, ब्लैंकेट बनाने का काम आएगा। लेकिन ये जो स्पिनिंग करते हैं जो यार्न जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि उससे हम जो है वूलन प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं, और इसमें जो है और आगे चल के हम जो है और डिफरेंट डिजाइन के जो है इसमें हम सर क्योंकि इसका कॉस्ट 18,000 के करीब आपने बताया, तो हर कोई क्या इसको अफोर्ड कर सकता है कम्युनिटी में जो है कि उनको दिक्कत आती है इसे अफोर्ड करने? सर कम्युनिटी में तो एफर्ट करना
सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, खाली ऑडियो ऑन रखें तो आपकी आवाज साफ आएगी। अच्छा सर वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकता है। उसको क्या करना सर कि 2 भेड़ें ही उसको बेचनी है, लाइक इफ ही कैन सेल टू एनिमल्स तो वो इतना एफर्ट कर लेगा, कम बच्चा का परचेज कर सकता है। लोगों का इंटरेस्ट भी है इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्लियर मैंने पहले आपको बताया कि ड्यूरिंग माय रिसर्च काम तो मुझे लगे कि जो है कंडीशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। जब मैं सर्वे करता था तो इन लोगों का कहना था कि सर जो हमारी, क्योंकि 90% ऑफ दीज ट्राइबल पीपल्स दे आर एंगेज्ड विद दिस लाइवस्टॉक शीप एंड गोट रेयरिंग, तो इन लोगों का ये कहना था कि जो हमारी जो है उसको ऐसे ही नॉमिनल रेट से इसको हम जो है मार्केट में ट्रेडर्स को हम करते हैं। हमारा इतना अच्छा यूज नहीं होता है, अच्छा यूज नहीं है, क्योंकि क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो धीरे-धीरे लोगों का इंटरेस्ट है वो। हाँ मैम अब आइए। जी डॉक्टर साहब कुछ इसमें सेंसिटिव एवेल्युएशन आपने किया है? हाँ डॉक्टर साहब। सॉरी Dr. Saab, have you done some preliminary yes, sensory I will evaluation in this regard? Have you, sir, done any preliminary sensory evaluation regarding this? Have you engaged, sir? Have you engaged any these जो इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, उनको आपने इस क्वालिटी के बारे में उनके साथ किया? इनका कुछ लिंकेज ऑफ मार्केटिंग एंड इंडस्ट्रियल टाइप्स? मासूदी साहब अभी नहीं, मासूदी साहब अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सर जो मैंने ये जो स्क्रीनिंग को किया है, इट्स विद द कंसल्टेंसी ऑफ CSW अभिकनगर राजस्थान। ओके उनकी CSWRI अभिकनगर राजस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मेरी एक सजेशन रहेगी सर, I have a submission. मेरी एक सजेशन रहेगी। One is we have to explore how it can be beneficial to our tribals from the point of view that how it can increase efficiency and quality. One part. Second part is what type of breed, wool breed this can give good results. Second, third is how we can link them to market and how they can be industrialized. That is the main thing. And fourth thing is that we have tribals across. We have taken a small pocket. So you have to look the other opportunities as well. How they can basically they are nomads. They will go to upstairs in upper reach during summer. So what are the options that they can easily carry these things along with them, so that they can do their वहाँ पे वो काम करें, क्योंकि वो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कीजिए वो ठीक। बाकी तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपने दिखाया 2000 का लोकल है, ये इज इट मैन्युअली ऑपरेटेड और इट इज दिस फ्यूल ऑपरेटेड? नो सर मैनुअली, इट्स हैंड ऑपरेटेड। अच्छा मैनुअली, इट इज मेड अप ऑफ, ये कैरी करने में इजी हो जाता है या थोड़ा सा भारी है? सर कैरी करने में ना नॉट इजी, कैरी करने जैसे इसका अराउंड 40 to 50 kg वेट रहता है इसका। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज योर इसका वेट जो 40 to 50 kg है, कैरी करने में नहीं है ना। तो डेफिनेटली गिवन बाय मासूदी डेफिनेटली तो सर ये एम्बर चरखा आपकी लैब में ही प्रिपेयर किया कि आपने ये टेक्नोलॉजी कहीं से एक्वायर की थी सर? राजस्थान। जी सर सर, इसको पोर्टेबल बनाने के विषय में कुछ आपने सोचा है कि ऐसे मतलब, क्योंकि आपने बताया 50 kg वेट है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सर इसका दाम 18,000 के अराउंड है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ डेफिनेटली सर, पहले के जैसे हम जो हमारा गांधी चरखा था सर, पहले घर घर में मौजूद होता था। अभी जैसे इसका वेट इतना ज्यादा है, इसकी कॉस्ट भी इतनी ज्यादा है, तो हमने जैसे एक मिल लगा दी तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लोगों तक।
जबकि मैम वो गांधी हाँ चरखा बिल्कुल घर में होता था सर। हम पे देख रहे हैं, इस पे हम देख रहे हैं कि इसको अगर लकड़ी का बना दिया जाए, लकड़ी का, तो उसका वेट जो है वजन कम 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 हो जाएगा और रेट जो है वो फास्टर प्रोडक्ट कम होगा। तो लाइक वी आर लुकिंग ऑन इट, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑन इट। जी जी जी। तो सर और फिर ट्रेनिंग कैसे दी आपने इन लोगों को, आपने गांव वालों को रीच कैसे किया ट्रेनिंग के लिए, किस तरीके का मैम ट्रेनिंग के रिस्पांस था लिए आपको कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से? ट्रेनिंग के लिए जो पार्टनर इंस्टीट्यूट था, कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट जो हमारा CS सेंट्रल शिप एंड गोल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान अम्बिका नगर, तो वहां से जो है मास्टर ट्रेनर जो है CSWR मास्टर ट्रेनर को बुला के हम लोग ने गांव में जो है हमारे जो तो वहां पे मास्टर ट्रेनर जो वहां से बुला के CSWRI से बुला के इनको हमने ट्रेनिंग दी और इसमें हमने 10 जो है मास्टर ट्रेनर बेनिफिशियरीज को ट्रेनिंग। सर महिलाएं भी शामिल हैं सर इसमें, जो ये लोग जो इसका वर्कफोर्स है फिर उसमें? मैं एक वो कर रहा हूँ कि गुजरात बकरवा ट्राइबल कम्युनिटीज में जो स्पिनिंग का काम होता था उसमें 90% जो फीमेल्स का ही रोल रहता था। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम फीमेल्स को ही ज्यादा हमारा फोकस ये था कि फीमेल्स को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। डॉक्टर साहब ये कितने महीने का इनका काम है? हाउ मच दे हैव दिस पोटेंशियल? कितने महीने? मासूदी साहब ऐसा है कि तो जैसे आप बारामूला की तरफ या ये की तरफ चले जाएंगे तो सारा की तरफ चले जाते हैं, तो पीर प्लेन एरियाज में लोअर अल्टीट्यूड्स में आते हैं तो 6 महीने का काम हो पाता है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए जो बीचेस पे चले जाते हैं तो वो वहां पे काम नहीं हो पाता इनका, because they are nomadic ना, they keep moving all around the year. सर वन वेरी मासूदी बेसिक साहब। क्वेश्चन कि ये जो एम्बर चरखा की बात हम लोग कर रहे हैं, इज इट सम मॉडिफिकेशन और मॉड्यूलेशन ऑफ गांधी चरखा की ये एकदम ओरिजिनल एकदम अलग ही चीज है एकदम, कि उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है गांधी चरखा को कि वो ऐसा प्रोडक्ट निकाले कुछ? Sir, it is a totally modified structure. It is not modified. It is totally different from Gandhian चरखा। तो गांधीयन चरखा से टोटली अलग है। एक तो लाइक ये तो उस पे एक गांधीयन चरखा जो है वो 1 स्पिंडल है, तो ये 8 स्पिंडल है। इसमें जैसा कि एक स्पिंडल पे आप मतलब गांधीयन चरखा जो 1 स्पिंडल है तो उस पे क्वांटिटी जो है 8 टाइम्स इसमें बढ़ जाती है, जो हमने लाइक जो फील्ड में लगाया हुआ है तो इसमें 8 टाइम्स क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। सर तो कोई ऐसा STI इंटरवेंशन सोचा जा सकता है या किया जा सकता है जो गांधीयन चरखा में किया जाए कि वो इस तरह से काम करे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? सर डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जा सकता है, डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जा सकता है, किया जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सर जैसे कि आपने बताया था कि कोई कम्युनिटी मेंबर्स तो आपके साथ नहीं आ सके, लेकिन कोई उनका वीडियो हो जिसपे हम उनकी बात सुन सके, तो इज इट पॉसिबल? मैम आई विल वीडियो, इट्स अ 127 MB। तो इट्स नॉट नो प्लेइंग सर? 127 MB एक मेरे पास वीडियो है लाइक। So No, you no, just try listen, listen, but it how is possible for you to play. how no, definitely I will try. I'm just going to share screen share desktop window. Can I share it? Share windows. So can I click it on Windows or entire screen? Sir, either of them. Okay. If it is visible in the window section, then you go for the window section. Otherwise, you can go for the entire screen option. So is the video being played on your system? Okay, it is playing on your system right now.
So you can choose the entire window option also, and the only the window option, and then from that you can choose the particular window of the video. Entire screen. Shall I click it on Yeah, entire you screen? try it for the entire screen, sir. कैसे होगा ये? वो तो show नहीं हो रहा है यहाँ पे. Can you do like ये जो है ये like 127 MB है और half जो है it is uploaded ना on the email. So we can like play it at the end of the session. ठीक है सर, ठीक है. By Thank you so 4:30. much. Thank you so much. Meanwhile it will be uploaded ना. It is 127 MB, so it will take time to upload on Sure, the sir, email. no problem. Thank you so much, Tufail, sir. And your end, you can. Now I request to start with the next technology, and I invite my colleague Dr. Seerat to please take over the next session. Thank you, Dr. Nidhi. Am I audible? Yes, Seerat. Good afternoon, everyone. The second technology that we are talking about today is establishment of rural nutri-bakery for fulfilling nutritional requirements and income generation of tribal and rural communities. The technology developer is Dr. S.R. Azad from Madhya Pradesh Vigyan Sabha, Sagoni Kalan. The change makers are Srimati Fulbati and Kailash Malgam from Durga SHG, Harsh Tiwari, and Srimati Subarmati and Dinesh Durve from Draupadi SHG, Markadana. And the beneficiaries are the representatives from Durga SHG and Draupadi SHG. So I would welcome Dr. Azad. Sir. Okay, thank you so much. I am here. Yes, sir. So, sir, could you share with us about how you began this venture? Actually, we are working with the technical course of last couple of years, and then under the technology course support, we have developed so many technologies in our state, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So one technology package we have developed regarding the rural nutri-bakery concept. We have developed a nutri-bakery products in the rural areas because we studied one study conducted by under the core support of the nutrition of the rural tribal people. Under the study, we have found that a lot of bakery products available in the market, in the rural market, rural hearts, but they don't have much nutrition in between. So then we decided that all the product came from the outside the village, outside the area, basically in the, from the urban area. Then we decided why not we can develop this technology package for them at rural area. Then we have developed a system for the bakery, and we are utilizing the raw material for the rural people. They are producing or they are collecting from the forest or agriculture field. So two areas we have take up. One is the NTP non-timber forest produce, like Imli, Aula, Mahua, and Bale, etc. And second is crop, primitive crops like minor. So we have a combination of these. We have developed the products for the rural areas. So in this regard, we have standardized all these technology packages for the product, and there's lot of trial and testing and from the different target groups. What is the level of taste and acceptability of the people? We have decided, and after the outcome of the from the feedback from the people, then we finalize the product. So presently we have 4-5 products. Number one is the some cookies from the with the mahua and balar and bale and mahua, sorry, and aula. This is the one combination because our product is a complete nutrition. So proper iron will be there and vitamin C will be there, protein will be there.
then is a complete package for the rural children and women also, because in rural areas malnourished children is too much. Third and fourth level is very high in the rural areas, and women also very high anemic condition in the rural areas. How to address through this product? So we are introducing this product in our field station at Hasdiwari. We have set up the rural bakery and rural traditional furnace also. We improvise the traditional furnace. About the capacity of this bakery, about 50 to 100 kg per year per day production capacity. Presently, this group producing about uh, in the 3 location, it is a product standardized by our headquarter at Bhopal, and is replicated to 3 different locations and climate locations. One is a semi-dried area at Chiupur and Karhal area. Another is Tamia block and Hasdiwari, and third one at Kanker, Mudpar. These are 3 different locations we have as per the crop and availability of the forest resource. We have developed this product. So Mahua cookies is very popular in this whole business. Another is this minor millets and cookies and buns and this kind of bread and rusk toast kind of. This is 4 products in this area, and all 3 locations we have replicated different product groups in like Chhattisgarh. There is a Ballar, and nobody understood because the Ballar is a local same with the beans. They are drying it after the production. They dried it and make it dal and pulses, and then that can be used for the protein and vitamin C. For the vitamin C, we are using amla in the area, and for the iron and minerals, we are using this mawa flour, dried mawa flour. And these are the combinations we are using the product, all the buns, rusk, and cookies. And also sometimes we are also making these cake, also small cups, muffins kind of things. That is also very popular in the both areas. Azad sahab, I would like to ask, do you use any specific technology for blending mahua with these wheat flour and other ingredients to produce these cookies you are talking about? Yes, nobody before us, nobody using the forest produce based cookies. Or basically, our is a local, how to develop the local economy, because presently lot of bakery product came to the village but not properly is nutritious, and 80% money goes to the outside the village. So this our is whole technology package is based on the local resources. So And what is specific technology? What is specific technology you use for blending it? Two things very important. One is the product protocol, and second is the system designing for the bakery. Because standard quality, the standard machine system is available in the market, but we standardize this protocol as per the need and production capacity. So one bakery unit become a catering the 8 to 10 villages. This is the mechanism. So it is not a very new kind of thing, bakery techniques. It is available, but we are designing the system as per the need of the local people. So this is the bakery, this is the main. And product protocol developed by us. This is a standardized and FSSI standard we are following, and our quality control lab is properly manage all these things. And after the marketing trial, we are producing presently this technology replicated to the government agencies about 4 or 5 places in Madhya Pradesh and in tribal districts. They are producing so many bakery products under our guidance and training. So basically, our main input is the product design. How much quality, so how much nutrition will be there? That is important. Yes, please. Can Yes, you please. please turn on Yes, your please. camera, sir? Okay. Yes.
Thank you, sir. Okay. So, Then sir, next, I have one question. How okay. did you like select these plants for these products? Because they are like very unconventional plants for bakery products. So, did you face any trial and error in getting to an acceptable taste or flavor? Yes, yes, yes. Actually, we are working last 25 years in the forest area, or we are facilitating the livelihood through NTFP, non-timber forest produce. So in raw form or powder form and supply to the traders. But during this whole process, Sir, we are sorry, sir. Sir, just one yes, minute. please. Can you place the camera a little further? Yeah. Yes, yes. Now it is okay. Yes, sir. Please continue. जी प्लीज क्या बोल Please रहे हैं continue, आप? sir. Sir, continue. मेरा आप ये जो कह रहे थे आप कहना है continue मुकुल, कीजिए. मेरा ये कहना है कि हाँ. ये जो पूरा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो शहरों से जाने वाला बेकरी प्रोडक्ट है, उसमें उस तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं है जिससे कि उनको फायदा हो। और चूंकि वो प्रचलन में है, तो हमने इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को हमने कन्वर्ट किया न्यूट्री बेकरी प्रोडक्ट में। तो उसमें हमने कि वहां पर क्या रिसोर्सेज है जिसको कि हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और लोगों को उससे इनकम भी मिलेगी और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो जैसे आपका महुआ कलेक्ट करते हैं ट्रेडिशनली लोग वहाँ, तो उसको कैसे आपका कलेक्शन कैसे करें, उसको कैसे ड्राई करें, कैसे स्टोर करें, दिस इज द वन एरिया फॉर द ट्रेनिंग। After the collection of that mahua, we are after the drying, we process and make a pulp and blending with the atta flour, or sometimes initially we are started with the maida, but we are reducing the maida and we are introducing the flour, pure mahua flour and 40% roughly 30 to 40% of the atta, and 14 is like a pulses flour about 20%, and other material about the sugar and other things about the 20%, like 100% material we are using from the local, but 20% is the cost required for the outside, like a yeast, like a sugar, like a vegetable oil kind of things. We are purchased from the outside, but 80% raw material we are procuring from the local people. So this money remain in the village. After the preparation of the product, that product will be purchased by the local people. Then money rotated at the rural area, not go to the urban area. So this is our perception for this product development. This is the one product. Under this combination, we have developed cookies, we have developed the toast, we have developed the cake, buns, and also bread. These are the 3-4 products we have developed, or very much people accepted, because initially the mahua is a very critical kind of thing. लोगों को ये लगता है कि mahua खाएंगे तो नशा आ जाएगा बस, लेकिन वो उसको हमने एजुकेट किया है कि नहीं, उसमें जब तक फर्मेंटेशन नहीं होगा तब तक उसमें आपका नशा नहीं होता है। तो आज के समय में वो प्रोडक्ट जो है भोपाल में, आपका रायपुर में, ग्वालियर में, जबलपुर में भी हमारे यहाँ से जा रहा है। और नाबार्ड के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं वो अपने मीटिंग्स के लिए वो हमारे से भी ले रहे हैं, और बाहर भी यहाँ से ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग वो लोग कर रहे हैं वहां से। तो आपका बाई पोस्ट भी जा रहा है, आपका एक्सप्रेस सर्विस से भी जा रहा है, और आपका फ्लिपकार्ट से भी जा रहा है। तो ये एक मार्केटिंग डॉक्टर साहब कैन आई इंटरवेन? डॉक्टर साहब जी, कैन आई इंटरवेन? हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब? You have talked of sir. Dr. Sir, this is Dr. Masudi from Kashmir. Basically, you talked about you have worked in Chhattisgarh as well regarding this aspect. So in Chhattisgarh, sir, yeah, Chhattisgarh में sir जैसे बस्तर एरिया है, बारनावापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, so they have a lot of wealth which can be explored. Have you tried to have interaction of ethnomedicinal properties of those plants with these bakery items? जो वहाँ पे plants है, basically I have written a book on ethnomedicine of Barna Wildlife Sanctuary long back in 2010.
सो वहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट जैसे आपने मोवा बताया उसका बार्क यूज करते हैं, तुलसी का करते हैं रूट यूज। नहीं बार्क नहीं सर जी, मैं फ्लावर नॉट बार्क। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मतलब कम्युनिकेट यू कि ये प्लांट्स का यूज होता है, मोवा का बार्क भी यूज होता है, मतलब वो इस तरह से जैसे आपका फान एक प्लांट है उसका रूट यूज होता है, बीरा का होता है रूट यूज, है ना, देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स। तो ये दोरा का होता है बार्क यूज। सो हैव यू ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज, जिसमें क्या है जो इनका रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि ट्राइबल एरियाज का काम है, in tribe they are basically tribal areas, they are dependent on ethno medicines for their that medicines and all those things. agree doctor, agree. बेकरी को उसके साथ कुछ वो टच दिया है so that a product can be effective and it can be purchased at high rate. अभी हमने जो आपका फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ही टेकअप किया है, लेकिन वी हैव द प्लान for the some medicinal plants, tuberous and leaves also we can incorporate in our nutritional and this immunity booster products we are trying to develop in this financial year. Then we can incorporate all these suggestions given by you that can be incorporated in our product. It will be future immunity booster product. So that is okay, great, sir. Kindly go through my book that is in lab, ethnomedicinal properties of bottom wildlife sanctuary. We have documented around 200 species. If you share your book, yes, we have worked there on this aspect. So is the case. I was very much happy to see you working on that area. So I have worked in 2008. Our full-fledged field station at Kanker in the Dudawa road in a tribal area, and very good infrastructure is there. All of so many suggestions you have made, we can incorporate in our next product. So it will be very good. But if you share your book, then we can also use that. My only submission is you just mix ethnomedicinal properties with nutraceutical items so that it can be booster, immunity booster, and other things. It can be it can have good rates in the market. That can be real sustainable development. Thank you. We will also send you sample our product. If you send your address to me, then I can try to send some product to your place. That can be also, and then suggest something out of that. This is my suggestion. Thank you. So nice. Okay, sir. Thank you, sir. Another one important point we are include in this thing. Vitamin C we are using the aula, and also the bale is a very rich for the different immunity products and stomach problems. That is also we are incorporated in our cookies and buns. We have all tested in a different age groups. Taste, flavors, and crunchiness, other things, all the parameters under the nutrition we are collected from the colleges, offices, and tribal people. Some products is a very good appearance. Some of the then we are improvising regularly. But during the Corona period, so that speed our all the speed our very goes down. Now we have started again this thing. Then it will be possible to we will also give the nutrition effect to the among the children and women also. That report also we will collect from the field, and that report also in future is useful for the others. Our technology is also demonstrated by the government. We are establishing all the technology machinery equipments in the field, and also providing the training for the tribal women. This all the our whole training and technology managed by the women in Dindori and Mandla and Kanker and Shivpur, and also in Tamia block. That all the technology managed by the women groups, and they are easily managed, but is marketed by the hawkers as a local youth. This is the next linkages. आजाद साहब एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ आजाद साहब, ये आप हेलो
हाँ, आपका जो ये सुनाई एरिया है देता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ अल्कोहल एब्यूज की समस्या बहुत है, खासतौर से ये महुआ वाली जो अल्कोहल होती है, कंट्री मेड लिकर जो होती है। तो क्या जो महुआ क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुकीज या बिस्किट्स, तो कुछ इस समस्या का भी समाधान उससे हुआ? कुछ उन लोग का रुझान इसके प्रति बढ़ा हो कि उस तरफ का हुआ? इस मसले को ऐसे कंधे में नहीं लगा, लेकिन जो महिलाएं जो है अभी ज्यादातर जो है रूरल एरियाज में लिकर में चीजें जा रही थी, तो कम से कम उसका एक 10-20% जो है आपका अब ये प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ जा रहा है, तो इससे एक पॉजिटिव साइन तो है। लेकिन अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने तो इसको कंट्री लीकर को जो है आपका एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए उन्होंने 500 लीटर कैन प्रोड्यूस द लोकल आपका ग्रुप, देन क्या प्रोवाइड द ऑल द रिलैक्सेशन इन द एक्साइज ड्यूटी। तो वो एक अभी डिबेट चल रही है, आपसे उसको क्या होगा उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये है कि ये बहुत जल्दी होगा मुझे कुछ कहना इस बारे में कि अभी बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इनकम जनरेशन और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट जो है वहाँ के लोगों को बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि उसका काफी बड़ा हिस्सा जो है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू तो इसमें काफी है, इसलिए लोग उसमें आ रहे हैं। और क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड फ्रूट्स हैं जिनको कि हम इसके साथ ब्लेंडिंग करके उसको सामने ला सकते हैं। तो बेसिकली हमारा अभी लिकर इतना फोकस में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जैसे हमने लिकर के लिए हमने कहा था कि जो सैनिटाइजर है वो सैनिटाइजर जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उस समय लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम था, तो हमने उसका पूरा स्टैंडाइज किया था पैकेज की जो कंट्री लीकर है वो करीब 30% आपका वो आपका अल्कोहल उसमें होता है उनके उसमें। तो हमने उसको स्टैंडाइज करके 70-80% तक उसको हम लेके गए थे प्रोसेस करके, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में पॉलिसी क्या बनती है भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किधर जाना है। लेकिन तो अभी हमारा मेन फोकस है प्रोडक्ट पे। तो आपको लगता है कि जो कंसेशंस आपने जैसा बताया कि लिकर मैन्युफैक्चरिंग में दे रही है सरकार एक्साइज ड्यूटी पे, और वैसे कंसेशन आपके बिस्किट और कुकीज मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलने चाहिए? अब देखिए क्या होता है, तो जब आपका गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है तो उसमें काफी स्कोप होता है, लेकिन देखते हैं कितने समय में इसका दबाव बनेगा इस पूरी तरह का। अभी तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कलेक्टर भी काफी प्रोएक्टिव हैं आपका महुआ और अदर क्या एनटीएफटी बेस्ड प्रोडक्ट को बनवाने में, और वह आंगनबाड़ी को पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आपका जो आंगनबाड़ी में जो मील देते हैं दोपहर में बच्चों को, उसमें वो आपका इसके बने हुए कुकीज एंड अदर प्रोडक्ट्स वो सप्लाई कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लोकल लेवल पे बन रही है। तो हम देखते हैं उसको आगे कैसे हो सकता है। अभी तो कुछ कह नहीं पाएंगे कि कितना इसका बेनिफिट आगे आने वाले समय में, क्योंकि जहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन बड़े पैमाने पर होता है तो वहाँ पे जो है बड़े ताकतवर लोगों का कब्जा उसमें हो जाता है। इसलिए हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री की बात नहीं की, इसलिए छोटी छोटी बैकरीज 10-12 गाँव के बीच में अगर हम सेटअप करते हैं तो उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिलेगा और उनका न्यूट्रिशन को भी शायद हम एड्रेस कर पाएंगे इसके माध्यम से। बेसिक कंसेप्ट हमारा इसमें कि इस लेवल का सिस्टम डिजाइन करिए जिससे कि लोकल लोगों को की नीड को सॉल्व कर सके और वो उसको ओन भी कर पाए, क्योंकि बड़े लेवल पे करेंगे तो फिर उसको मैनेज करना और उसको आपका कोई मेंटेनेंस मैनेजमेंट करना तो वो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने इस लेवल पे इसको डिजाइन किया कि इसीलिए लोकली जो है महिलाएं उसको मैनेज कर पाए, लोकल आर्टिजन उसको मदद कर पाए। तो इसका लोकल कंजम्पशन ज्यादा होता है, कि आप बाहर भेजते हैं? नहीं, अभी तो मैक्सिमम लोकल है, लेकिन जो हमारा ये आपका स्टेट का अलग अलग फेयर्स लगते हैं, नाबार्ड का, ट्राइफेम का, ट्राइफेड का, तो उसमें भी वहां से आपके प्रोडक्ट्स हम मार्केट में यहाँ एग्जिबिट करते हैं, तो काफी एक्सेप्टेबल है वो, काफी लोग पसंद कर रहे हैं उसको। और कुकीज तो महुआ की तो बहुत मतलब हम नहीं दे पा रहे हैं कि जितना हमारे पास कलेक्शन होता है, क्योंकि उसको अगर महुए का कुछ बनाना है तो आपका कलेक्शन से शुरू हो जाती है उसकी प्रोटोकॉल, ताकि वो जमीन पे नहीं गिरे, उसमें रस्टिंग नहीं आए, फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो, तो उसको कलेक्शन जो है जमीन पे गिरने ना गिरे उसके उसके नीचे जो है नेटिंग की जाती है, कलेक्शन किया जाता है, फिर प्रॉपरली ड्राई करके देन स्टोर किया जाता है। तो ये काफी प्रोसेस है। तो अभी जितना हम कर पाते हैं, हमारी टीम वहाँ पर जो महिलाओं के ग्रुप है, तो वो उतना ही हम कर पा रहे हैं। अभी इसको बड़े क्वांटम में ले जाने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट काफी चाहिए होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारा, तो इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। सर, ये प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? हाँ, कुछ जैसे बंस एंड ब्रेड की जो है वो आपका 72 आपका आवर्स है, बाकी की 3 मंथ है। ओके। और आप ये क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये प्रोडक्ट्स के?
हाँ, एक तो हमारी अपनी क्वालिटी कंट्रोल लैब है जो हमने DST के मतलब कोर सपोर्ट से हमने सेटअप की हुई पहले से। तो उसमें चूंकि हम पहले से ही काफी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम अपने पैरामीटर्स जो हैं उस पर हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हम गवर्नमेंट लेबोरेटरी को भेजते हैं, तब वो उस पर फिर सर्टिफिकेशन करके फिर वो हमें लाइसेंस जारी करते हैं। तो फिर वो हम उसके रैपर्स में और उसमें सब हम उसको लगाते हैं ताकि जो है उसकी क्वालिटी या पैरामीटर्स उसमें रिफ्लेक्ट कर पाए। तो ये हम उसमें करते हैं। डॉक्टर साहब आपने और कभी उसके बाद डॉक्टर साहब आई हैव सबमिशन, ये जो वाइल्ड फ्लोरा हम कलेक्ट करते हैं फॉर आवर प्रोसेसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें क्या है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदिश तो नहीं है? देयर इज एनी प्रोहिबिशन और उसके लिए हेलो, कोई लाइसेंस चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, आई एम हाँ आई सर, एम कहाँ घूम सर गए? सर जो जो जैसे हम वाइल्ड फ्लोरा जी, कलेक्ट करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन ट्राइबल, दे आर बेसिकली ऑल रिजाइडिंग इन वाइल्ड एरियाज। तो वहां पे जो जी, फ्लोरल वेल्थ है, अगर हम उसको यूज करते हैं, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द जी। फॉरेस्ट, इज देयर एनी स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है कोई स्टेट का कि हम नहीं कर सकते हैं? या इसमें कुछ नहीं आपने देखिए, सोचा है कि इनको नहीं आपने सस्टेनेबिलिटी, चूंकि काम वन 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 मोर सर, नहीं डॉक्टर आपने साहब कुछ आपने, सोचा सस्टेनेबल हाँ कैसे जी इसको प्लीज। बनाए लॉन्ग रन के लिए, जैसे कहाँ पे कंटिन्यू फ्लो रहे इस चीज का, जैसे ये इसको फिर बढ़ा भी सकते हैं, तो हाउ दे कैन नहीं एमेंड नहीं एग्जैक्टली, इट लॉ? नहीं नहीं बिल्कुल लॉ तो है। मैं आपको दो चीजें आपकी बात से है। पहली चीज तो एक्सेस की जो वो है, तो जो NTFP एक्सेस का जो ट्राइबल राइट है उसके तहत वो जंगल से लेके आ सकते हैं और उसको मार्केट, पहले TP लगता था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था कि आप जंगल से कोई भी चीज लाएंगे उसको आपका उसका ट्रांजिट पास आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या कहते हैं, जो NTFP एक्सेस जो लॉ आया था उसके बाद से ये रिलैक्सेशन है कि आप वहां से कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वॉच रखनी पड़ती है कि सस्टेनेबल तरीके से आप उसको हार्वेस्ट करके लाएंगे। No, तो have you हमारा worked जो on एक that? बड़ा, Sir, have you worked on yes that कि yes we कितने are working for निकालेंगे? that, we Yes. are क्या कहते हैं टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्राइफेड, we are providing regular training to the farmer tribal collectors for the sustainable scientific and Have you made sustainable any harvest. have you made any sir plans to have conservatory area where they can introduce, domesticate, propagate, conserve, and they can take benefits of all things side by side? They can multiply their produce so that कल ये sustainable रहे. Have there any policy on that you have framed? Your suggestion is very taken and very good. But in Madhya Pradesh and Chhattisgarh is a law is very important कि यहाँ जो पूरी जो फॉरेस्ट लैंड है या फॉरेस्ट एरिया है अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, we can't go with the direct the forest anything any intervention. So this is we are only providing the training to the frontline staff and also tribals how to collect from the any NTFP from the forest in a scientific manner. So we have the protocol and we have developed the training modules and books for the tribals. So under this banner, we are regularly providing the training to the farmers and frontline staff also. So they will manage, they will do that. We don't have any intervention directly to the forest area. सर, आपने कहा था Yes. कि पहले मतलब आपके ये प्रोजेक्ट के पहले ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आते थे वो सिटीज से आते थे, तो अभी जब से आपने ये मतलब ये प्रोडक्ट्स की सेल स्टार्ट की है तो उसमें कुछ कमी आई है क्या? जो मतलब बाहर से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें कम हुए हैं क्या? जो हमारा एरिया है, जो हमारे एरिया में जहाँ हमने सेटअप किया है उसके अराउंड तो हमारा ही प्रोडक्ट आज मार्केट में जा रहा है। और चूंकि उसकी क्वालिटी और जो कहना चाहिए जो टेस्ट एंड फ्लेवर है वो जो है उनसे बिल्कुल भिन्न है। और चूंकि हम इसको न्यूट्रिशन को एड्रेस करते हुए बात कर रहे हैं, इसलिए उसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे इस ट्रैक में जो 10-12 गांव का जो हमारा क्लस्टर है उस एरिया में तो हमारी प्रोडक्ट की काफी अच्छी मांग है, डिमांड है। और इवन जो हमारे भोपाल में जिन लोगों ने या इंदौर में सॉरी जबलपुर में लोगों ने जिन्होंने भी टेस्ट किया है तो वो भी लगातार हमसे डिमांड करते हैं, तो हम उनको भी बीच बीच में हम उनको सप्लाई करते हैं। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि उसका बाकायदे हमने न्यूट्रिशन असेसमेंट किया था पहले प्रोडक्ट का और उसके बाद ही हमने न्यूट्रिशन की बात करनी शुरू की। और चूंकि बच्चे और महिलाएं हमारा फोकस एरिया है इसलिए हम ज्यादातर उसको फोकस करते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने कभी कोशिश की इसको ऑर्गेनिक वो दिया जाए, नेम दिया जाए? Because being a wild floral wealth, can we give it an organic name so that it can give more benefits, more income to the farmers? नहीं डॉक्टर साहब, we can say organic by default, but without the certification by the certification agency, we can't do that. We can't put it in our product. So your certification is very long. Have you approached for that? Have you tried for that? Have you No, tried? actually, आपने कोशिश की है उसके लिए, जैसे इनको नहीं वो अभी ऑर्गेनिक नहीं सेट की, क्योंकि इट के इज लिए नॉट मच। एक्चुअली 2 साल तो हमें काम ही करने का मौका नहीं मिला सर। अब ये आगे हम इस में सोच सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, आगे जी हम जी सोच सकते हैं, क्योंकि बीच में 2 साल तो लगभग हमारे पूरी तरह से डिफंड ही रहे, लेकिन अब ये साल में हमारा टेकअप हुआ है, तो देन वी कैन थिंक इन दिस वे। थैंक यू। तो सर, जो thank आपके प्रोडक्ट्स जो बाहर सिटीज में जाते हैं, तो और भी तो बहुत सारे ये मतलब मार्केट में प्रोडक्ट्स है ना, जो मतलब न्यूट्रिशन बेस्ड हैं, तो उससे आपको प्राइसिंग का कुछ मतलब कोई कंपटीशन आप फेस करते हैं क्या उनसे, मतलब जब आप बाहर यस सिटीज में? ये जी 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 देखिए, 2 चीज हैं कि जब भी आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिटिव मोड में लेके जाना है, तो जो कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके हिसाब से उसकी जो है प्राइसिंग करनी होती है, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर आपकी जब भी कंपेयर होगा कि ये प्रोडक्ट जो है इस कॉस्ट का है, तो आपका प्रोडक्ट भी इसी कॉस्ट के आसपास है। तो जब क्वालिटी की बात आएगी तो फिर वो टेस्ट पे आएंगे। तो फिर उसमें एक बार जो जब कोई टेस्ट करता है उस प्रोडक्ट को, तो फिर उसके बाद आपकी चेन शुरू होती है डिमांड की। तो हमने ये देखा है कि जिसने भी हमारे प्रोडक्ट को एक बार यूज किया, 2 बार यूज किया, उसके बाद वो हमसे उसी जो कॉस्ट हमने डिजाइन की है, जो कॉस्टिंग हमने उसकी निकाली है, हमें कहीं ये नहीं आया कि लोगों ने कहा कि ये बहुत महंगा दे रहे हैं। लेकिन जो गांव के लेवल पे हमने जो डिजाइन किया है, कि उसकी पैकेजिंग पे ज्यादा अच्छा हमने काम नहीं किया है। लेकिन जो बाहर हम बेचते हैं उसकी पैकेजिंग को हम थोड़ा ज्यादा उसको खूबसूरत और बेहतर बनाते हैं। अगर आप मेरे पर जो मैंने मटेरियल भेजा, उसमें मैंने फोटोज भेजे हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग के, तो उसमें आप देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी किस्म से हमने की है। तो ये है। बाकी वहाँ जब लोकल है तो लोकल चूंकि डे बाय डे है, तो उसमें बहुत लंबे समय तक आप रखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने उसको जो है थोड़ा कॉस्ट उसमें रिड्यूस हो जाती है। नहीं तो पर प्रोडक्ट में, पर पैकेज में आप मान के चलिए कि 250 ग्राम या 200 ग्राम्स में आपका 10 से 12 रुपए जो है आपका उसका आपकी पैकेजिंग कॉस्ट हो जाती है। तो वो हमारे उस तरह से उसकी कॉस्ट गांव के लोगों के लेवल पे तो हम उसको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हमारा जा रहा है। लेकिन बाहर को हम थोड़ा जो है कॉस्ट हम अप्रोप्रिएट रखा है, ताकि वो मार्केट के साथ तो अभी तक ये प्रश्न हमारे सामने नहीं आया कि साहब बहुत महंगा आप दे रहे हो। हमने कहा हमारी क्वालिटी न्यूट्रिएंट बाय डिफॉल्ट इट इज ऑर्गेनिक, हम नहीं क्लेम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वाइल्ड में कोई वहाँ पेस्ट डालने नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई आपका आपका केमिकल फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। तो इसका आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो ये हमारा जो कैंपेन है माउथ टू माउथ, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अगर इसमें ये अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं आपकी कुकीज की, कि ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाए, तो फिर उसके लिए ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। और रॉ मटेरियल इसका जो है महुआ, वो रॉ मटेरियल लिकर के लिए भी है। तो कहीं आप आगे इसको देखते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में कंपटीशन होगा, अनहेल्दी कंपटीशन होगा वो। एक्चुअल में क्या है, मैं इसको इस दूसरे एंगल से देखता हूँ कि लीकर ट्रैक अलग है, लेकिन अगर ये लोकल लोग प्रोडक्ट महिलाएं उसके ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, वही कलेक्शन करके ला रही हैं, वही उसको मेंटेन कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा, क्योंकि पूरे एरिया टोटल प्रोडक्शन का हम कितना भी बढ़ा लेंगे प्रोडक्ट, तो भी हमारा 10% से ऊपर जो है आपका रॉ मटेरियल कलेक्शन में हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है इतना आपको? इसलिए लगता है कि क्योंकि कभी भी आप अगर मान लो ये 10 आपके जो 10 गांव का क्लस्टर है, 12 गांव के क्लस्टर में जो अगर हमको साल भर के लिए चाहिए, वो लगभग जो है आपका हमने कैलकुलेट किया करीब 12 क्विंटल के करीब अभी चाहिए 50 kg पर डे के प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर हम बेकरी प्रोडक्ट को अगर लेंगे। और आगे जा करके अगर उसको हम डबल भी करना चाहेंगे तो भी जितना वहां पर प्रोडक्शन है उसमें बहुत छोटा सा हमारा ये आपका इंटरवेंशन है, इसलिए वो उसमें हमारा कंफ्लिक्ट अभी नहीं होगा। आगे जाके अगर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स अगर उसको कॉमर्शियल वेंचर के रूप में आगे लेके जाएगा, तो उस समय शायद ये सवाल आपका जो है
मुझे लगता है कि आड़े आएगा, उस समय कुछ सोचने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट डायरेक्ट अभी है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अभी हमने एक स्फूर्ति में हमने अप्लाई किया DST के साथ, जो है एक जो हमारा कोर सपोर्ट का चल रहा था, तो स्फूर्ति में भी हमने एक सबमिट किया एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कराने के लिए। तो उसमें आपकी ये बेकरी भी है, आपका स्पेस भी है, ये सारा मतलब फूड प्रोडक्ट्स को लिया है। तो अगर वहाँ स्फूर्ति में सपोर्ट मिलेगा तो शायद हम इसको शुरू करेंगे। तो उस समय जो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उस समय के बारे में शायद सोच पाएंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हमारे सामने में है। ओके, थैंक यू। सर, आपका डेली प्रोडक्शन 50 टू अगर 100 किलोग्राम्स के बीच में होता है तो आपके प्रॉफिट कितनी होती है मंथली, और लोगों को इनकम कितना होता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको? आप मेरा उसमें चार्ट, मेरा जो चार्ट आप देखेंगे, मैंने चार्ट भी लगाया उसमें जी जी। कि आपका जो है वो ग्रुप जो है आपका कितना करता है। तो रफली मान के चलिए एक महीने में जो है आपका उनका सारा करने के बाद जो तो टोटल अगर पर डे का भी हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो प्रॉफिट और मार्केटिंग का जो मार्जिन है वो 30% है। और उसमें आपका जो मार्केटिंग है बहुत, क्योंकि रूरल है तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आपकी मान के चलिए 20 से 25% जो है टोटल हमारा मार्केटिंग का जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा है उसमें। तो उस हिस्से का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो पूरे प्रॉफिट को थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एक तो वो है जो इसको प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो है। दूसरा जो है आपका जो, क्योंकि टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में हम हैं वहां पर, तो हमारा एक शेयर है उसमें, और एक शेयर है उसको इनहेंस करने का। जैसे हम उसको आगे और बढ़ाते जाना है तो फिर उसका एक शेयर हम उसके लिए बचा के रखते हैं। तो इस तरह से टोटल प्रॉफिट का 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं इक्वली, और उसी तरीके से उसको आगे ले जाने के लिए मैनेज करते हैं। तो ये अभी हमारा 2 साल तो एवरेज पिछला जो चला इनकम था। कितना होगा, मतलब जो महिलाएं हैं उनका एवरेज इनकम कितना होगा मंथली, अगर आप कुछ फिगर बता सके तो? हाँ, ये मान के चलिए कि ये जो महिला का ग्रुप है, क्योंकि हमने बताया कि 50 kg में बहुत है ना, तो बहुत दिक्कत तो नहीं है उसमें। लेकिन जो अभी प्रॉफिट का जो हिस्सा अगर मान लें कि 50, 60, 70, 80 kg पर डे का अगर हम निकाल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पर डे जो है महिलाओं को ये मान के चलिए 50, 500, 400, 380 से लेकर के 480 के बीच में जो है उनका लेबर जो वगैरह सब मिला करके पड़ जाता है। तो आपको मान के चलिए इतना है। लेकिन हमारा ये है कि इसको कैसे और आगे ले जा सकते हैं, ये भी एक उसका मुद्दा है। तो ये जैसे जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो क्वांटम बढ़ेगा, क्योंकि ग्रुप तो कन्फाइंड है ना। वो 20 लोगों का जो ग्रुप है, 10-10 लोगों के 2 SHGs हैं, वो तो कन्फाइंड है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका जो इनकम लेवल भी उससे बढ़ेगा। ये जो प्रॉफिट हिस्सा है अदर देन लेबर है, आपको मैं जो बता रहा हूँ, है ना, जो लेबर वही कर रहे हैं, वही सब उसको मैनेज कर रहे हैं। तो लेबर जो पर डे है आपका जो गवर्नमेंट का है, दो जो आपका इसमें मनरेगा में जो आपका पर डे की जो लेबर है वो तो उनको उसमें मिल जाती है, वो वहीं पे। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो उसके अतिरिक्त है। वो ये मुख्य रूप से। डॉक्टर साहब, कोई सैंपल आप अपने प्रोडक्ट का लेके बैठे हैं क्या? ऐसा में कुछ दिखा सकते हैं हमको? पैकेजिंग देखना चाहते हैं ना। वैसे उसमें भी है, मैं एक सेकंड, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, मैं फोटो दिखाता हूँ। एक्चुअली में क्या है, मेरे ऑफिस में पूरा पानी भर गया है। ये अभी बाढ़ आ गई हमारे पूरे इलाके में, तो अभी पूरे साफ सफाई में ही लगा हुआ है मेरा दफ्तर। तो यहाँ एक प्रोडक्ट रखे हुए थे ना मेरे, वो 3-4 यहाँ रखे थे ना, कहाँ रखे जा करके? अरे खाने के प्रोडक्ट और क्या। हाँ, तो किसने उठा के रखे? सर, वहां से ये बीच में, अरे ये कुकी नहीं, ये
आपका विनेगर है जामुन विनेगर, जामुन का भी उसमें यूज करते हैं। तो ये जामुन विनेगर कुकी रूपी से ऊपर से ला रहे हैं अभी। वो एक्चुअली पानी भरा गया था फर्स्ट फ्लोर पे, तो सारा सामान ऊपर के फ्लोर पे फिक्स किया है ना। तो वो है, तो काफी अस्त व्यस्त हो गया है, नहीं तो हमारी बैटरी यूनिट जो होता तो ज्यादा आसानी से दिखा पाते फील्ड में। सर थोड़ा सा प्रोडक्ट को पीछे करेंगे, विजिबिलिटी कम है। ये आपका जामुन विनेगर है जो हम ट्राइबल के यहाँ डेवलप करते हैं। और ये ड्राई महुआ जो हम पैक करके रखते हैं आप 1-2 किलो के, ताकि उसका प्रोसेस में यूज हो पाए। और तीसरा जो है ये मिलेट कुकीज है, ये ऐसा पैकेजिंग है उसका मिलेट कुकीज का। तो 200 ग्राम का ये मिलेट कुकीज है। इसमें क्या है ना, ये मिलेट कुकीज का है। इसी तरह के सारे पैकेट्स हैं हमारे, और उनमें अलग अलग प्रोडक्ट जो है हम पैक करते हैं। उसके ऊपर यहाँ लिखा रहता है, जैसे हम मिलेट कुकीज लिखा हुआ है ऊपर, तो वहां पर लिखा रहेगा महुआ कुकीज, ऐसे करके वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। और फिर यहाँ पे इसके ग्रेडियंट जो है आप देखेंगे, इंग्रेडिएंट क्या क्या है उसका, वो भी यहाँ पर साइड में लिखते हैं। और FSSI का जो है नंबर वगैरह वो सब उसमें हम डालते हैं। तो सारा डिटेल्स उसके अंदर दिया जाता है, ताकि वो, और बेस्ट बिफोर जो यूज कितना कर सकते हैं वो भी लिखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये कुल मिलाकर के हैं। तो ये अभी सब अस्त व्यस्त है हमारा सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर ऊपर अभी फर्स्ट फ्लोर पे मैंने पड़े हुए तो कुछ तो मैंने आपको दिखाने के लिए लाया है। तो सर जैसे ये प्रोडक्ट्स जो हैं अनीमिया और मालन्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए हैं, तो आपने कोई सैंपल स्टडी किया क्या वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन में कि इन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से कोई फर्क आ रहा है क्या? हेलो, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ नहीं, एक्चुअली नेटवर्क अंदर था तो ठीक नहीं था, ये आ गया मैं बाहर, अब फिर आवाज अच्छी आएगी। जी प्लीज। ओके सर, तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा ना कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं जो लोकल पॉपुलेशन में अनीमिया और मालन्यूट्रिशन है उसको टैकल करने के लिए है, तो कोई आपने सैंपल स्टडी किया है क्या वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन में, ये देखने के लिए कि इन प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से कितना फर्क आया? अभी अपने प्रोडक्ट का भी नहीं हमने किया है, लेकिन पहले किया है कि क्या स्टेटस है उनका, है ना। तो वो स्टेटस में आपका माल न्यूट्रिशन ग्रेड 3rd and 4th में बच्चे हैं काफी वहां पर, उनको लिस्ट आउट किया है। लेकिन अभी जो हम दोबारा से जो ये शुरू किया है, तो उसमें अब हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज है, उनका जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है उनके साथ में हम उसको डिजाइन किया है। तो वो हमारा ये आपका ये जैसे बरसात खत्म होगा तो उसका फीडबैक हमारे पास जो है आ जाएगी स्टडी। तो वो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब बात होगी तो उसमें वो डेटा प्लेस करेंगे। तो कोई चेंज मेकर्स हैं क्या आपके साथ अभी जिनसे बात कर सके? चेंज मेकर मेरे फील्ड में है, मैं वो जो नंबर दिया हुआ है आपको, वो नंबर में अगर कॉल लगेगा तो वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो तो हमारे अभी मुश्किल है शायद। तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो उनके मतलब जैसे कोविड के टाइम पे ये प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा था, तो उस टाइम में वो क्या कर रहे थे? उनका मतलब लाइवलीहुड सोर्स क्या था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो आपका जो कुछ था तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ गांव में भी लोगों की एंट्री, लगभग गाँव का उनका अपना मैनेजमेंट था, तो वो अपना जो भी उनके पास था तो वही कर रहे थे, उसमें ज्यादा कुछ हमारा नहीं। लेकिन जो स्कार्सिटी जिनके यहाँ प्रॉब्लम थी, खान पान की प्रॉब्लम थी, वहाँ हम लोगों ने राशन सप्लाई किया था, कलेक्शन करके यहाँ से सब लोगों से वो किया था हमने उस टाइम पे। और फिर उसके बाद जो है जो माइग्रेंट लोग बाद में आए, उनके लिए हमने फिर शुरू किया आपका वहाँ पर जो है, जो वापस नहीं जाना चाहते थे, वापस नहीं गए, तो उनका आपका जो जिनके पास लैंड था, तो हमने आपका मल्टी टायर आपका वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए जो है उनको प्रमोट किया विद द सपोर्ट ऑफ द नाबार्ड ने उसमें हमें सपोर्ट किया था। उसको लेकर के हमने उनको सेटअप किया, करीब 100 आपका माइग्रेंट लेबर्स को हमने उसमें लगाया था। और उन्होंने तब से 3-4 ये चौथी क्रॉप अभी आएगी उनकी, सॉरी 3-4 क्रॉप हो चुकी है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा जो है मार्च में खत्म भी हो गया,
लेकिन अच्छी इनकम हुई उनकी, उन्होंने खाया भी और उसके बाद उसको जो है मार्केट में बेचा है। तो उसका भी हमारा पूरा एनालिसिस है कि जो माइग्रेंट लेबर को जो हमने वहाँ सेटल किया था वो उनकी आपके कितनी इनकम हुई और वो क्या सोचते हैं, उसका एक छोटा वीडियो भी है हमारे पास, वो हमने भेजा था। लेकिन अभी इमीडिएटली तो हमारा भी सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आगे हम उसको शेयर कर सकते हैं। जी, तो जो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड क्या था? फार्मिंग है था या कुछ और? नहीं, दो देखिए, आप ये जब भी ट्राइबल पे हम बात करें तो ये मान के चलिए मेजर जो उनका लाइवलीहुड है वो फ्रॉम दी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर है एंड थर्ड उनका जो है जो मनरेगा वगैरह इस तरह के जो हैं उसकी जो लेबर है। ये थ्री आर द मिक्स्ड लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम इन द विलेज, इन ट्राइबल विलेज पर्टिकुलरली। तो वहां पर ज्यादातर जो कलेक्शन है आपका 50-60% जो है फ्रॉम द फॉरेस्ट है आपका, करीब 30% फ्रॉम दी आपका एग्रीकल्चर एंड रिमेनिंग जो है फ्रॉम दी लेबर, फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड अदर डिपार्टमेंटल लेबर एक्टिविटीज। उसके तहत उनका लाइवलीहुड सिस्टम वर्क करता है। दिस इज द मेन थिंग। तो इन 2 सालों में जब से वो आपके साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लाइफस्टाइल वगैरह में कुछ चेंजेस आए हैं, उनके हेल्थ में, उनके एजुकेशन में? ये निश्चित रूप से एरिया सिंस लास्ट 10-15 years इन दैट एरिया। तो वहाँ पे हम अलग अलग तरह के अपने एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रायल्स, डेमोन्स्ट्रेशन से काफी हम वहाँ करते आ रहे हैं। एक समय था वहाँ पर जो है आपका टोटल इम्यूनाइज्ड बच्चे नहीं हुआ करते थे, सब मैक्सिमम आपका टीकाकरण नहीं हुआ रहता था। आज के समय में 100% इम्यूनाइजेशन बच्चे पैदा होने से लेके आज तक सब हैं। दूसरा, पढ़ाई के लेवल पे उस समय कुल मिलाकर एक 8th क्लास की हाई मतलब क्वालिफिकेशन की एक बच्ची थी वहाँ पर, बाकी सब प्राइमरी तक ही जाके रह जाते थे। तो आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के बच्चे, ये मैं पूरा पीछे से बैकग्राउंड से बता रहा हूँ, ये 2 साल का नहीं है, लेकिन वो चूंकि वहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे एक बड़ी तादाद में आज बच्चे कॉलेज तक पहुँच गए हैं। आपको कुछ एक उसमें तो दो या तीन तो मेडिकल एजुकेशन ले चुके हैं और गवर्नमेंट में करीब 112-120 के करीब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बाहर उनको इमीडिएटली जो है आपका ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी करने के बाद उनको वो कोई ना कोई जॉब में गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस समय भी काफी लोगों को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो अभी काफी तादाद में गवर्नमेंट और टीचर भी करीब आपके 20-25 टीचर बन चुके हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट के दूसरे उसमें डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो ये सब चेंजेस तो आ रहे हैं ट्राइबल एरिया में, जहाँ पर इस तरह का थोड़ा सा एक्सपोजर मिल रहा है। हम एक्सपोजर के लिए बाहर लेके आते हैं, भोपाल ले जाते हैं, जबलपुर ले जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो वो भी एक है। जैसे यहाँ पर जब हमने बेकरी का और ये सब इंटरवेंशन किया तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है यहाँ पर भोपाल में, तो वहाँ पर उनको जो है एक्सपोजर की लेके आए, वेजिटेबल कल्टीवेशन की एक्सपोजर ट्रेनिंग यहाँ पर हमने किया। तो ये एक अलग उनको एक्सपोजर मिलने से काफी वहाँ पर लोगों का एटीट्यूड जो है उनकी मानसिकता में तब्दील तो आई है। जी। और आपका एक्सपेंशन के क्या प्लान्स है, मतलब फ्यूचर में, मतलब ये प्रोजेक्ट को आप एक्सपेंशन में एक तो ये है कि हम तो लगातार गवर्नमेंट को पॉलिसी में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका रूरल एरियाज में जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं बेकरी प्रोडक्ट के नाम पर, उनको एज ए न्यूट्री बेकरी प्रोडक्ट के रूप में उसको डेवलप करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोकल डेवलप हो रहा है। 2 चीजें हैं वहाँ पर। तो इसीलिए अगर वहाँ के रिसोर्स बेस्ड अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम रूरल आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्रामीण औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे जो है जैसे प्रोसेसिंग का है, गांव से कोई भी प्रोडक्ट सेमी प्रोसेस होने के बाद ही बाहर जाएगा तो वहाँ वैल्यू एड हो जाएगी, तो गांव के लोगों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा और उससे जो है फिर उनकी लाइफ स्टाइल में तब्दीली आएगी, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज पाएंगे। अभी मेरे को नहीं लगता कि हमारा जो क्लस्टर है उस क्लस्टर में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो जो है ड्रॉप आउट उस तरह से हो रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा ट्राइबल इलाके के बच्चों का हुआ। तो थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, तो कुछ हम इस तरह के कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे कि उनको थोड़ा फैसिलिटेशन भी रहे वहाँ हमारे। तो हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं हमारे सेंटर के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनको फैसिलिटेट करते हैं कि स्कूल तो जाना है। तो ये मुख्य बात है उसमें। तो अभी आपने कहा कि फ्लड भी आया हुआ है, तो उसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ा है? जी,
अभी आपने मेंशन किया ना कि वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या नहीं, ये प्रोडक्शन रुक फ्लड गया है? नहीं, हमारा ये तो नहीं, हमारा जो फ्लड है वो तो हमारे हेडक्वार्टर में है, अच्छा जहाँ हम बैठे हुए हैं, है ना। ये अच्छा हम आपका बाहर दरवाजे पे बैठे हुए हैं, बाकी ये सब हमारे अंदर जो है ये सब फैला पड़ा हुआ है ना। ओके तो ये हमारे अच्छा साथी हैं जो आपका पीछे खड़े हैं, ये अभी हमारे टेक्नोलॉजी और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी नमस्ते ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो ये कर रहे हैं। तो इस तरह का है। बाकी फील्ड में तो आपका बरसात है, लेकिन वहाँ पर उतना फ्लड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी फ्लड हो गया, क्योंकि ये 2-4-5 साल में हमारे यहाँ फ्लड पता नहीं, हमारे को टेस्ट ट्रायल करते हैं कि क्या कहते हैं आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, तो फिर हम लोग को बस तो, ठीक लेकिन है अभी सर, थैंक यू सो सफाई हो गई मच। है, कल से हमारा ऑफिस है व्यवस्थित। प्लीज प्लीज थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स, आपसे बात एनीबडी? करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Anyone has any questions? I don't think so, sir. Thank you so much. वो डॉक्टर साहब का जरा एड्रेस जरा शेयर करने के लिए बोलिएगा, जो आपका जम्मू कश्मीर से बोल रहे थे, है ना। जी जी, मैं उनको बोलूंगी आपको मेल कर देने के लिए। जी प्लीज, थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। For the next session, I would ask my colleague, Mr. Abhinav, to take over. Thank you. Thank you, Sira. With this, we come to the third technology, that is the establishment of Coastal Fisheries Information Hub. For this third technology, we have Dr. R. Kiruba Shankar, scientist, ICAR, Central Island Agricultural Research Institute, Port Blair. And then we will first talk to Dr. Shankar and then with the beneficiaries. Dr. Shankar. Yes, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Sir, first and foremost, you narrate us about this technology, about this fisheries information hub that has been established and how it is beneficial for the fishermen community. Okay, so good afternoon, everyone. This is Kiruba Shankar from Kari, Andaman. So we belong to ICR. So we have taken up a project with the support of DST in order to establish a coastal fisheries information hub for the Nicobar traditional communities who are living in the Nicobar. So Nicobar traditional communities are one unique tribes among the 6 inhabited indigenous tribes from Andaman and Nicobar Islands. So their headquarters is in Car Nicobar, and they are mostly fishermen who do subsistence fishing in order to carry on their livelihood and the employment and income generation. So Nicobar traditional communities are also one of the most socialized tribal communities among all the indigenous tribes who are from Andaman and Nicobar Islands. So for them, Car Nicobar is the headquarter, and they are doing fishing with a small traditional fishing hodi, which is named as a kind of hodi. They call it as hodi. So with that, they do fishing and they do for their livelihood also. So we have taken up initiative through DST on establishment of a coastal fisheries information hub. So this information hub naturally unifies all the traditional fishermen who are fishing in the region, and this hub acts as an information generation and dissemination hub also. It shares the information about the fishing related activities to all the tribal communities who are there. Naturally, this Car Nicobar is a group of 15 villages. It's a very small island, flat island. It's almost 120 square kilometer area with a 50-kilometer coastline. This is one of the very vulnerable island with respect to climate change, like sea level rise or climate change and other kind of things. So these communities are one of the most affected communities due to tsunami and earthquakes that very frequently occur in this kind of region. So we have taken up this initiative in collaboration with the tribal council in order to establish a hub so that their fishery based needs are fulfilled at one stop point, so that all these activities, right from fishing and marketing and their subsistence needs, product development, every activities were brought under this coastal fisheries information hub. And this hub acts as a melting point for all the fishermen with regards to their knowledge generation and also for their information with regard to fishing. We disseminate information on the fishing zones, where to fish, where not to fish, how to fish, and what are the good management practices in fishing, and how to differentiate between a good fishing practice and bad fishing practice. All this information were being generated. So this is a very recent initiative we have taken up for the past 6 months. This project is in operation.
we got the financial support during January 2020, and henceforth we have taken up all these activities in collaboration with the Tribal Council. We have established the baseline information on the marine aquatic biodiversity like coral reefs, mangroves, and other aquatic fauna that are in and around the Nicobar Islands, and how these kind of ecosystems are also vulnerable to climate change and other associated events. That also we are studying. We are also teaching the tribal fishermen on where these ecosystems are available, what are the fisheries that are associated with this ecosystem, and how to protect and conserve these ecosystems in the rise of the climate change events and all these things. So that way we are trying to develop a coastal fisheries information hub. We have already established a location. We are developing it further into a hub. It's already only a 6 months old project. So this is in brief about that. So they are normally depending on this marine fisheries, small scale fisheries. They go for fishing on a daily fishing or hourly fishing only. The women tribal fishermen are also involved in fishing activities. They glean the fishery resources, hand collection, and they only catch a very handful amount that are required for their daily needs, daily food needs and all. They won't have a kind of selling option or marketing option or something. They only look for their own subsistence and other needs. So we wanted to develop a marketing facility in order to augment their livelihood and to improve their economic activities, all these things. So our hub will act as a interconnecting point of all these mentioned activities. So this is in brief about our. Dr. Shankar, the first question that crosses one's mind is how your center connect with the fishermen, or how your center connect with the fisher folk, members of the community. Do you have any communication channel? You invite them at your hub or your center, or you visit them door to door? How it is done? Actually, we had a group of meeting with the tribal council. So we keep on sensitizing the tribal council on the requirement of this hub, how this hub will help. All these things we keep on sensitizing them. So the tribal council themselves have came forward with respect to establishment of this hub. They gave their own facility, and they are very actively involved in developing this facility, because they could sense the kind of benefit that the tribal communities are going to get because of this establishment of a hub. So with this kind of thing, their support is very crucial, and they are giving the very active support also. So that way our work is going on ahead without any issues. Yes. Why I ask this question is because venturing into deep sea or in the littoral zone only, sometimes weather forecast is an essential prerequisite for that. So how you provide information on that to the fishermen? Actually, we provide information through the agromet advisories, like the weather-based advisories, when the weather will be bad, and when they should go for fishing, when they should not go for fishing. And apart from that, their indigenous traditional knowledge is also one very important thing, wherein That they is know another very well. aspect, but the thing is Yes. how you disseminate the information, how you Yes. disseminate. So we normally use mobile-based informations in order to communicate such type of adverse events and all, how we can go there. So as I already told, this hub is in still establishment phase only. It does not completely fulfill. However, this idea is very new for this Nicobar group of islands. So that way, we are looking forward to develop it further. So we have our own mode through our Krishi Vigyan Kendra, which is located in Nicobar, which is our own organization. So our team will also disseminate. They are in very frequent touch with the tribal fishermen. So that way we are generating the information and passing the information also. Okay, so on one end you are in touch with the fisherman community. Yes. So you must also be working in close association with other agencies and departments related to. What are those departments? We work with the Krishi Vigyan Kendra, which is in Nicobar. So that is our active collaborating center, which is a part of our own institute. We also work with the State Fisheries Department, Andaman and Nicobar administration also, and we are actively collaborating whenever there is a program in terms of training, capacity building, or HRD programs. Everything we are very actively collaborating. You must also be collaborating with some weather forecaster. Yes, our own institute has a weather forecast team, agromet advisory team. So with them also we are collaborating and we are passing the information. Okay. I would request you to elaborate on some of the important information that you disseminate to the fisherman community. Okay. We normally disseminate weather-based advisories like heavy rainfall, when to go, where not to go, all these things. And naturally, we provide information on the potential fishing zones, like where the accumulation of the fishes will be more, where they should go for fishing,
and what will be the depth there, there will be a fish will be available. So all this information we are getting from another agency inquest. So from them we are disseminating to the tribal fishermen also. So that way we are passing the information. These are the two major information which fishermen require from our side. So we are, as of now, how many members of the community, fisherman community, are associated with you? This information. As of now, we have a group of 150 at present who are very actively associated, and we keep on expanding this team further because as you already know, this is a very new initiative, and we still have 3 to 4 years of working time under the project. So we keep on expanding. We fix a target of around 1,000 tribal fishermen in the network. So that will be. Won't you think it is a very small number, 150 or? No, actually, if you see, even the licensed fishermen are also very, very less at this point of time. And this Nicobar is one of the very remote island where the access is very, very difficult. Even for us also, moving there and getting the work done will be a very difficult thing at this point of time. So we for a very short period of time, this is a very good number. I can say 150 is a big number. So we have a team of 150 at present, and through them they will be disseminating the information further. So we hope that more and more of fishermen will be joining in our loop, so that we will be efficiently disseminated. That is why this hub establishment will act as a connecting point. That way it will be more useful. Do the member of the community approach you with their problems? Yes, they approach us with some problems. Because we had some socio-economic surveys and to understand their issues with respect to fishing and other things. So through that kind of interviews, we normally gather the issues what they're facing. Yes. Okay. So what type of problem they approach you with? So they normally face issues such as availability of fuel, fishing inputs, repairs, engine repairs, because we do not get a very good kind of a repair shop or something in case if there is an engine failure or something. Unlike other parts of the country, here we have the issue with respect to manpower for repair or to make the engines rectify due to some issues, all these things. And next one is the weather. Weather is another one big issue here. These are very remote oceanic islands, which are very widely influenced by the monsoons, like southwest monsoon, northeast monsoon. So all these things widely impact. So this is also one issue due to which their fishing trips will be reduced drastically during certain times. These are some of basic issues. Fuel is one big issue that they say. Do they have mechanized boats, or you talked about they do some? Not have a mechanized boat. They do not have mechanized boat because they are very traditional Aboriginal people. So they normally go with small donkeys, which they call as hodi. That is a very traditional craft. 1 or 2 people only will go in that. So very small traditional fishing craft. And how far they venture in sea with that donkey? Actually, they even venture 30 to 40 nautical miles also. Nearby island, there is a very famous island, Patimal. So there also they go and fish. So, but now recently due to this increased weather and cyclone events and all, now they normally don't venture that far. But during the time of February or March, once the weather is very, very good, they used to venture such far. Otherwise, they normally fish in their own village range only, where they can see the shore. Up to that distance only, they normally go and fish. Yes. So, what changes it has brought in their lives, this information hub? Yes. Now, actually, we have prioritized the need for registration of the fisherman into the kind of a scheme, because that kind of a habit was not there naturally. They do not register or they do not insure their fishing activities or the fisherman scheme. So that way, first we motivated them to go for insurance, go for registration, so that their fishing activity become a part of networking with a very proper kind of thing. So these type of things we are moving, and we are also in a process of making a designing a fishing craft where they can venture for long distance and they can bring more fish. So that is one initiative we have taken up. So that way we are motivating them. So we keep on motivating, and our activities will continue. So they have to register themselves with UT administration? Yes. Some department of that? Some department? State Fisheries Department. State Fisheries Department. Okay. Can you help us connect with some of the beneficiaries? Okay, so I have a change maker. He has come all the way from Nicobar to our facility. Today only he has reached. So I think you can interact with him and get the information.
Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. We would like Yes, to know your name. my name is Mano Thomas, fisherman of Piglapati village, Kanagwa. So, Thomas, sir, please tell us about your experience with this information hub and with the fisherman community on the other end. हिंदी में बोलिए था, हिंदी में बात करेगा आपसे. ठीक है सर. सर, आप अपना अनुभव बताइए जो आपको फिशरमैन कम्युनिटी के साथ हुआ और जो इस इंफॉर्मेशन हब के साथ जुड़ने के बाद हुआ. मतलब सर ये हब जो अभी बनेगा ना वो हम लोग को फायदा मिलेगा उसमें, क्योंकि हम लोग फिशरमैन लोग से डाटा कलेक्ट करके उसमें फिशरमैन लोग भी अपना ट्रेनिंग भी कराएगा, वहाँ में क्या क्या सुविधा भी मिलेगा, इसमें सब कुछ फायदा मिलेगा फिशरमैन लोग वहाँ पे अगर हब बनेगा तो वहाँ पे. तो आप वैसे कैसे काम करते हैं थॉमस सर? आप कैसे हाँ? काम करते हैं? आप कैसे काम करते हैं थॉमस सर? मतलब कि फिशरमैन कम्युनिटी के बीच में इंफॉर्मेशन लेके आप कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं? हम लोग ना जब वहाँ फिशिंग करता है तो अपना आदमी लोग लेके कुछ ना कुछ इनपुट्स देता है हम लोग वहाँ. जैसे और ये के वाला भी तो इनपुट्स देता है फिशरीज को. जी. फिलहाल अभी बीच में हम लोग को आइस बॉक्स दिया है, जाल दिया है, नेट फिशिंग नेट और ये डाइविंग का कुछ सामान दिया था. अभी शुरू करते हैं और लोग आदमी लोग फिशिंग करने के लिए, ये डाइविंग करने के लिए. जितना ये केवीके वाला लोग को, ये केवीके वाला लोग हम लोग को इशू नहीं किया अभी बीच में, सब कुछ ही हो गया हम लोग का फिशरमैन लोग किनारा में मछली पकड़ने के लिए. फिलहाल अभी मॉनसून टाइम में हम लोग फिशिंग नहीं करता है वहाँ, क्योंकि ओपन सी है और छोटा आइलैंड है हम लोग का, वो तो मुश्किल होता है हम लोग. अच्छा. तो जब वेदर ठीक होने से हम लोग फिशिंग में चले जाता है. एक फिशरमैन जो होता है उसका एक दिन का जो एक डोंगी लेके जाता है उसका एक दिन का कैच कितना रहता है फिश का? एक दिन का कैच कभी कभी लार्ज रहता है, एटलीस्ट 100 kg तक मिलता है, लेकिन छोटा होड़ी है वो ज्यादा पिकअप नहीं कर सकता है. ज्यादा बड़ा मछली मिलने से कोई टाइम बड़ा मछली मिलता है, सुरमई वगैरह, हवा सुरमई, ब्लूफिन वगैरह, ये सब वहाँ मिलता है निकोबार में. लेकिन छोटा होड़ी है करके हम लोग ज्यादा लेके नहीं आ सकता है मछली. तो ये जो जी बताएं. और हम लोग कमती रेट में हम लोग मछली को सेल करता है, 200 रुपीज पर केजी का हम लोग सेल करता है. और एक होड़ी में कम से कम 4-5 जन आदमी जाता है मछली पकड़ने के लिए. और कम से कम 6-8 घंटा तक वो लोग वापस आता है मछली मार के. क्योंकि फिलहाल हम लोग को मच्छी कम मिलता है, क्योंकि हम लोग के पास बोट नहीं है ना. क्योंकि हम लोग का ट्रेडिशनल बोट है, वहाँ में छोटा होड़ी 4-5 जन जाता है. अगर वो बोट मिलने से तो ज्यादा दूर जा सकता है, जैसे कि पतिमाल तक जा सकता है. और क्या बोलता डीप सी में भी जा सकता है अगर बोट होने से. वहाँ हम लोग को बोट नहीं मिलता ना, इसलिए अपना होड़ी में जाता है. तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इंफॉर्मेशन फिशरमैन को जो प्रोवाइड की जाती है वेदर को लेके और सी में कहाँ मच्छी पकड़ना है कहाँ नहीं पकड़ना है, इससे क्या उनके कैच में फर्क आया है? कैच बढ़ा है उनका? थोड़ा फर्क आया है. हम लोग अभी पहले की तरह नहीं, पहले की तरह आसानी से मच्छी पकड़ लेता था. अभी तो मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग का ये जो फिशिंग ट्रॉलर आके पोर्ट फेयर से हम लोग का निकोबार में आके सब मच्छी को ये लेके जाता है. और हम लोग को मुश्किल होगा निकोबार में. कोई 3-4 फिशिंग ट्रॉलर आता है यहाँ डीप सी में, ये क्या बोलता है पोर्ट फेयर वाला फिशरमैन लोग, इसलिए हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो गया मछली पकड़ने में. और कोई समस्या आती है? ऐसे तो हम लोग को यहाँ फिशिंग इनपुट्स का जरूरत है, जैसे कि फिशिंग लाइन है, फिशिंग हुक है, उतना निकोबार में नहीं मिलता है सब चीज.
और बोट का भी प्रॉब्लम होता है हम लोग का इंजन के लिए, क्योंकि ना इंजन बनाने वाला कोई नहीं है वहां पे, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है इंजन का। जैसा कि पहले वाला केवीके दिया था इंजन ना, 2-3 बार दिया था इंजन के, वो भी जो खराब हो गया अभी भी। अब तो रिपेयर भी कोई करने वाला नहीं, कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है, इसलिए तो हम लोग को वही प्रॉब्लम है। हम लोग केवीके तो बहुत मदद करता है हम लोग, अवेयरनेस करता है फिशिंग के बारे में, क्या सब कुछ पूछते रहता है हम लोग को, क्या 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 चाहिए करके सब हम लोग को पूछता है। फिर हम लोग जो हम लोग प्रपोजल देता है केवीके को फिशरीज डिवीजन को, तो वो लेके आता है। जैसे कि अभी बीच में आइस बॉक्स का डिमांड, अभी भी डिमांड करता है फिशरमैन लोग कोई चीज को। अभी फिलहाल अभी तो 20-15 क्या बोलता है फिशिंग रॉड भी चाहिए, क्योंकि लेडीज लोग भी फिशिंग करता है ना फिशिंग रॉड से, इसलिए वो वही लोग भी चाहिए इस लोग को। अभी बीच में ये लोग बोलता था हमको क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंपनी लेके आया था ना तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो आप ये बोलता फिर आपके बारे लेके आएगा बोलता ये वाला। और क्योंकि बहुत फिशिंग में इंटरेस्ट भी है लेडीज लोग जो फिशिंग रॉड से, लेकिन वो डीप सी में नहीं जाती हैं फिशिंग करने में। डीप सी में नहीं जाता वो लोग, खाली किनारा में रॉड फिशिंग करता है किनारा में। आपसे कितने थॉमस सर, कितने लोग फिशिंग कम्युनिटी के आपसे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं? हमारा 15 विलेज है जी, और 100 से ज्यादा लोग फिशरमैन है। लेकिन कोई लोग अपना लाइसेंस भी अपडेट नहीं करता सर, इसलिए तो फिशिंग फिशरीज बहुत है वहाँ, हर विलेज में फिशरमैन लोग हैं, लेकिन अपना लाइसेंस का अपडेट नहीं करता। फिशरीज से कल कितना लेके आता है वो, कोई लाइसेंस ये क्यों अपडेट नहीं करते हैं लाइसेंस का, क्या वही रीजन तो ना मुश्किल है, क्योंकि फिशरीज में ना कुछ केयर नहीं करता उसको, पहले अप्रोच करना उसको ना, तब आना है। अब डॉक्टर शंकर होंगे, अब थोड़ा सा उनसे बात कराइए। ठीक है डॉक्टर शंकर। Yes, sir. Sir, he has told about the problem of fishing trawlers. Can you please elaborate on that? Yeah, actually, it's mechanized and motorized small scale vessels. So this type of conflicts usually exist in all the parts of the country. So normally they go with a very small fishing vessel. They catch a very handful amount of fish. The trawlers come and they harvest in tons. So this issue is a very common thing. So where do you see the solution of this problem? No, that is a different form of fishing, and the tribal communities, they fish in other ways. So we cannot compare this both. So these are two extremely different kind of fishing activities. Yes. So theirs is a traditional and subsistence based fishing. They normally come with some 50 kg or 60 kg based on their own requirement only. So wherein the trawlers, they catch huge numbers, and so that is a very different form of fishing. और इन्होंने कहा कि स्पेयर पार्ट्स की और इंजन की देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड ऑफ इंजन, and that is what that repair and spare issue is always there, because these are very logistical issues which are faced all over the world by the remote and small island developing states, and this is a very common issue. So now the situation is developing slowly, so we hope that these things will sort out further also. So your information hub will provide solution to we are trying to train the fishermen themselves on kind of getting spares repaired and all these things, so that they can resolve their own issues instead of depending on someone else. So that way we are trying to develop a training module for the tribal fishermen. Yes. And the third problem which he talked about is that fishermen community is not keen on getting themselves registered. Why is it so? Fishermen community. Yeah, members from fishermen community. Yes. Usually that is what theirs is a very organized fishing practice on their own terms. So they do not normally depend on the fisheries department and others and all, because
there are few tribal villages which are in very close vicinity to the very populated area, but there are very far away located kind of villages are there where they do not give importance to this type of things and because they have been doing this for thousands of centuries, and but we are motivating them. We are telling the importance of insurance. We are telling the importance of registration. What are the benefits they may get? So it won't take a very quick change. It will take some time, but we hope it will be sensitized to them properly. In how many days do you see your center developing as a complete hub, information hub? In another 1 year, ours will be fully functional. Yes. So do you have any video of the community members? Community members video we do not have, but I have sent the photographs and all where we have conducted the sensitization programs with regard to the project. I have shared that in the mail also. So videos we are yet to take on this type of things. Once we develop something very successful, we'll go for videos and other things. Can you share those photographs here also on your screen? Those are in another system, I think. But, I'm very sure. Sorry, those are in another system, I think. So no worries. Okay. Yeah, it is there. So I hope our yes, it is there. So this is the first inception meeting which we have conducted in May 2022 with the tribal council members. So here we have sensitized the importance, and we have conducted village level meetings also. On the on-spot interactive meetings also we have conducted. So these are some of the photographs where we are sensitizing the tribal fishermen on the importance. These are some evening meetings we have conducted in the villages, and we have given some sensitization program. Our change maker Manu Thomas is there in this photo, so he is playing a key role in transforming the ideas of carry into the tribal council. Yes. Are women also involved in fishing activities? Yes, women do involve themselves in fishing activities. So that is a process called gleaning. They normally hand collect the resources. So they collect these shells, small demersal animals which are lying, and they even go for line fishing also. They normally stand on the shores and they connect. They do fishing activities with the lines also, fishing lines and rods. So that way they collect some handful number of fishes, which may be useful for their daily consumption and other things. Yes. Thank you, Dr. Shankar. And thank you, Thomas sir. With this, we come to the discussion session of our program. I invite Ms. Tusha for it. Thank you very much for the. Please stay with us. Thank you so much, Abhinav sir. Now we move to the final panel discussion session. As is the theme of the panel discussion session, we have a roundtable discussion on how to nurture and support the local innovation that are produced or supported by the different projects of the government. For this session, today we have with us, just a second. Today we have with us three participants, Dr. H. Hemant Kumar, who is currently Executive Secretary in Karnataka State Council for Science and Technology. And we also have Dr. Nasir Hamid Masoodi from J&K. In the panel discussion, we have the tech developer from the first community, Dr. Tufail sir. So this panel discussion, as we all know, is basically focused on providing the systemic solutions to the problems that are that came up from during the three discussions that we held today. So I invite Dr. Hemant Kumar sir for his remarks. He is currently investigating the Karnataka Natural Data Management System and also the State Spatial Data Infrastructure Project, the bio dryers to address the malnutrition, and also the SNT cell, and heads the intellectual property rights and the TISC cell of the KSTC.
He has received the Geospatial Excellence Award in the year of 2014 by India's Geospatial Forum for Karnataka State Spatial Data Infrastructure Project. And presently, his interests are mainly focused on catalyzing STI, the Science, Technology and Innovation System, for assessing, implementing, and delivering appropriate solutions to state-specific issues and solutions. We welcome you, sir, on board, and the stage is yours for your comments on, basically the question that lies with us is, sir, we have seen that some problems were there in each specific region that we discussed, and the SMT councils of this region came up with some formal innovation system to provide a solution. So how do we aim to channelize the local innovation system so that they can be connected with the formal innovation system? Because definitely a local innovation must have been there in the place to solve that problem in a frugal way also, but there must have been a system. So we would like to hear your comments on this, sir. Yeah, Hemant, sir? Yes, Yeah. good afternoon, sir. Can you please turn on your camera? the camera is turned on, right? Okay, sir. Sir, we cannot see you right now. That is, yeah. Thank you so much, sir. We can see you now. Yes, sir. The question is just the strengthening and nurturing the local innovation. This is the topic today. Yeah, but see, let me explain what is that we do in our council and in a formal way. In the sense, you understand that we have the S&T councils throughout India, and every state has an S&T council, which looks into many issues. One is basically bringing in awareness, capacity building. That's one way of looking at things. That's the most easiest one. The second one is taking up R&D projects and programs wherein it looks into local specific issues of the state, and either it can be done through R&D institutions, or it can be promoting that, or else if you have the strengths to manage it, you can do it individually within the councils. Then the third one is recently that we are most interested is bringing in innovation and bringing in a certain changes, not just routinely doing projects, which is mostly, we don't find it is something cutting edge or something which is actually attempting, because we don't want any projects to end up as academic research. So most of the time we work on lab to land kind of thing. Fortunately, being our council is conceptualized by the then IAC faculty, Professor Satish Dhawan and Professor Reddy. They thought it fit to take the inventions and innovation that happens in the premier R&D institutions, including IISc, to people. That KCST starts collaborating with IISc in a big way and facilitating the R&D initiatives of the IISc to the state. So to that extent, I think we have many projects and program. One of them is a good program, that is a local innovation, in the sense we support a large number of student project programs. So this is almost now, it's 45 years now. So it's a 45th year. Recently completed the 45th edition of student project program, wherein we understand that students of engineering colleges have a mandate to do the project work in the final semester. So because of that, it's a part of the syllabus. So what they do is they need to write do a small project, which could be a product, technology, a services, or a prototype, or it just could be a design itself. So in 78, 79, then they decided that we should somehow, because as you understand, Karnataka have a large number of engineering institutions in excess of 220. And we have a good number of students in terms of few lakhs. So there the question is, you need a lot of ideas, and some of them students are doing exceedingly well. And why can't we convert some of them projects which is doing exceedingly well and take it to the next level? That's the commercialization or prototype, product development, or whatever it is. So this has been going on, and so far we have done close to 13,800 projects, and this year alone we supported 1,200 and awarded about 75 projects. Now what we do is that once it is done, we take it to the next level of giving them
We're trying to get these projects patented and trying to organize an entrepreneur development program for them, and basically trying to look at any startup facilities and things like that. And if they do need mentoring, then how do you look at it? So these are the new initiatives that's been cropping up, because doing typical R&Ds, typical R&D projects and programs and getting nowhere is not a good thing. So fortunately, we have a good number of projects which actually comes out with products and services which you are proud of, and that's what the new education policy also looks into. So then, similar to that, we have a working and water. I mean, we take small issues, and in that, I think one of them, the title is the lecture local innovation. So just give an example. So we have this stoves in the villages. That's chulas, we call it as in Hindi, and basically we looked at was done in 1980s, and in the beginning and the late part of 1980s, and we as a scientific community and R&D group, we looked at the problem of the existing stoves in the villages, and we found that there are a few problems, like smoke is one of the thing, another one is the efficiency. So if we applied the principles of heat and conduction, convection, radiation, we came out with a highly efficient stove, and also it's basically smokeless. So we started with the two issues and we resolved it, and close to 2 million stoves were built around Karnataka in the rural areas. So that gave us a lot of satisfaction. Similar to that, we worked on wind and things like that. So basically, we do had an extension center that time to know these primary, issues surrounding the rural areas and the urban areas. And we had a rural extension center also, where we studied the needs of the people and the issues plaguing them, where I can provide the science technology intervention, so that their life could be better, and whatever they do, they can do it much more efficiently. So in that, we worked on solar, we worked on wind and building technologies. All this, I think, yielded in a big way, because we constructed close to 20,000 plus houses in Bangalore alone, using our energy efficient building technologies. And what we started as a normal way solar water heater systems in probably 1990s and 1995 up to that. Then we used to give a small subsidy, and now look at the stage Karnataka is in. It's almost 25 to 30% of the power generation is done by solar. I think that's a good growth in terms of that gives us happiness as a S&D council. So like that, we do a lot of other programs also in recent stages, that is cyber security, aerospace and defense. And one of the interesting thing that we do right now is, see, we had dryers all along in our rural areas, okay? But all the technologies that we had, what we call it as indigenous technologies, or that is there in the rural technology, they usually fail over a period of time, because there is no S&T inputs to keep it relevant and sustainable over a period of time. All indigenous technologies has to have continuously support of STI, that is science, technology, innovation, continuously into that. Otherwise, the products will, they just fizzle away. So one of them is bio dryers. So we had these dryers to dry fruits and vegetables. So what we did was this bio dryer, which we dry it so that it can increase the shelf life. Second thing is that, as we understand that there's a huge malnutrition problem in the state. In some districts, they have a huge malnutrition. So we thought, why not? Because you also know that we have a 30 to 40% spoilage in the fruits and vegetables. That's the kind of number that we get if you look at any NITI Aayog report. So one is reduce the spoilage, and how do you enhance the shelf life? So we had the dryer, we dried these vegetables, and now we are in the process of having a fortified food, which is basically meant for women and children specifically, because especially children and pregnant women need very badly. Otherwise, the mind of the child will not develop unless you have a good qualitative food. So that's we are doing at this point of time, and this is also we converted to a startup now. And fortunately, Government of India is funding about 5 crores to that.
we look at it as a Section 8 company and see that such similar things are done everywhere. So this is one of the things which we are doing. And another one exciting thing is all along we have many technologies and services, everything. But fortunately for us, social inclusion was we started now. That is can we have technologies for specifically SC/ST community? So we started a SC/ST cell for providing them skill in the current technologies and also the improvised indigenous technology for a better livelihood and also for creation of wealth. So these are some of the things. And we also help people in getting patents, copyrights, trademarks, designs, GIs, plant varieties. We have a robust ecosystem and we have established many cells among the engineering institutions. And this is basically, again, say this could be formal or informal. This patent cell is for everyone. So far, we have filed more than 800 patents and more than 50% of them are granted already. So this is also, to certain extent, largely possible for the new IPR policy of the government of India, which is actually reduce the process of patenting. I mean, earlier it was large, and I think we can get it in 18 months, and if we speed up, it also get it in 6 months. So this is some of the initiatives which is making the innovation thing. So one of the key thing is local innovation. Local innovators are, to a large extent, that they understand the pulse of the people and understand the local issues better, sometimes compared to other things. So what we are trying to do now from the council is, can I map the issues in every district and every taluk, and mapping of STI, what we call it as mapping of science, technology, innovation in every district, and what bothers them and how science, technology play a major role in improving their livelihood or skill development or wealth. See, basically there are two things. One is you need employment, you need wealth. So this is possible through improving I mean, we can call local innovation or engineering, whatever it is. But basically we look at people for a better livelihood, better skills, better employment. That's all we look at it. So we are doing the mapping, and I think it is almost come to an end. So we know that when you say a district or a taluk, we know that what kind of technologies they need, and we also come up with for the R&D institutions to come out with the kind of issues that is speaking in certain place and the kind of projects that they can look into it. So now it's more like you work on something which is realistic and something deliverable. So we don't work on academic projects, I mean, from the beginning itself. So we look on projects which have a people friendly or people usage approach. That's what we do. So STA mapping is helping us, even though we understand, we thought we understood, but I think when we go deep into it, there are many issues. So we mapped on 12 different sectors, and I think it's come out well. And hopefully this STA mapping also leads to STA policy, because we also need a good policy within the state, so that the budgeting and the kind of investment R&D are local, because you need support in every sector. Without investment, without the support of public funding support, it's very difficult. Other thing is what we are looking at is, can we have a perfect IPR and innovation ecosystem? Because when we talk about, when we talk about local innovation and whatever we talk, see, once, even if an innovator, you need a good marketing strategy, you need a good financial strategy, you need a financial support for them, you need some sort of a startup grant, you need some sort of an incubation facility, you need some sort of a, if there are technologies, we need mentoring as well, because sometimes you do come, many inventors come and they're stuck at some point because they don't, beyond a point, their technology or technical aspects will not support them to excel in whatever they're doing. So we need the mentoring, you need some sort of a policy incentives. So if I take up this, is there any policy incentives? And these are the things which you're looking at. And we have worked on it. Fortunately for us in Karnataka, the departments have many such facilities. Startup grant we also have incubation, mentoring and all that. But I think probably we need, we are doing all this already, but I think we need much more than what we are doing. And some of the things we look at it as common instrumentation facilities. And one thing which we found and the council is doing is supporting indigenous technologies through
R&D. I think that's where we very happy with. Some of the technologies could even survive now. They could survive only because the R&D support that we are doing. Otherwise, they just fail. The soil cement blocks, which I said housing, it was there much before. But since it is giving a very poor strength, so the people didn't understand. Because every day, every decade, the requirements, the visions, the aspirations, the people change. So once things change, and because of the population, because of the recent requirements, the innovation also has to be up to date and relevant and sustainable. So unless that is happen, that can happen only through working with institutions who have this kind of a facility. So that we are doing it. Probably policy, we should be able to bring in the STI policy. And we look at three things in a very systematic way. One is innovative technologies. The other one is innovative products. It could be urban, rural, then the innovative services. These are the three things we do. And apart from that, we have a robust IP and other things, I think, which we conduct 1 day program, 2 day program, 3 days. So we also tied up with multiple other departments so that can organize the entrepreneur development program for students or anyone, individual innovators as well. Because it's not just enough to know technology. It's also to be good enough in finance and marketing as well. So this we call it as a whole IPR ecosystem. So that culture we are trying to bring in now. And I think we are reasonably successful in that. And we have many such other programs. We do internship and PAC and all that. But let me not tell about other things that I do. I think if you have any specific questions to me, please do ask. Yeah. So we came across many, you have described many policy interventions that you are doing, that the council is doing at their level, like supporting the local innovators through incubation, through local mentoring and all, and also the mapping of the problems and the probable solutions that could be provided to them. So is it part of the state's policy, or any such intervention is also followed by the government at the central level? Like how this model of mapping the problems and the solutions, and also mentoring the local innovators through various processes, can be replicated in other places? How this model can be replicated to the other states as well? I think largely the credit goes to Government of India. I think especially Department of Science and Technology, Government of India, they have many such programs. I think you understand the STI mapping is also collective initiation of DST and the city councils. And sometimes some states do well in certain areas. Sometimes there is a central government initiative. But largely, I think some of the developed states like, Karnataka or Gujarat or India, they have sometimes they come up with a policy much earlier to the central government. But largely, I give the credit to the Government of India for initiating many such the visionary ideas. I think STI mapping is one wherein it's funded by them. And we have many policies in the state, except the STI policy. We have the other policies, startup policy thing. Because of the policy, the government provided a large funds for funding startups from 50 lakhs to 2 crores. From all kinds of mechanical, electrical, electronics, it could be manufacturing. So I think they helped quite a big number. I think government can only do certain things, but the best thing is we create a platform to excel. They create an atmosphere to excel. That's more important. Government can initiate certain things, then it will spread across. See, I don't say that government will fund everything. But government will start doing certain things, then it will catch up in a big way. The private investors, venture capitalists, other things, people will start coming, and it's fortunately government should lead and show the way. So then the others will follow. I think that way we give credit to them as well. Yeah. One more question, and probably this is the last question from our side. It would be, so we understand that we have followed the lab to land structure. Like most of the projects are basically focused on how the technology could be taken to the land. Can we look on to the land to lab structure? Like if there is some innovation that could be like formalized in a way that
it could go to the lab, get some formal technology or formal things put into it, and it can work on the land as well. Because like the frugal innovations, like we have some innovations that work well in some ecosystem, so they can be standardized and like validated at the lab infrastructure, and then it could be replicated and modeled for other conditions as well. So are we looking into it, or like are there any policies or any model that could be looked upon to follow the structure? No, I don't think we consciously look that way. But however, some of the technologies that we developed, it is came from land to lab. There is something already there in the land which had certain issues. So it came to the lab and we did the engineering aspects of it. We made it better and we again gave it to the land. It worked. And that's again the two examples that which I gave is one is the energy efficient building technology, other one is stoves. I mean energy efficient stoves. These are the two things which were not that it was designed by us. It was there in the land already. Only thing it had certain issues. So that was looked into in the lab. I think we can say both ways, lab to land and land to lab. Both ways it works, and it always works like that. It always works like that. And honestly, this also I picked up from you today, but it was not conscious from our side. But honestly, everything came from the land only. When I say lab to land, in the sense you observe something and get back to lab and do something better and give it back. But that's one thing. And right now is whatever that we could do, we are doing it. And whenever, but we wanted not just whatever only limited that we could do. Basically, you need to create that mechanism or a platform or an ecosystem so that everyone can excel, especially the individual innovators, because the regular government system, they aren't recognized, especially for funding, except the National Institute of Foundation, Innovative Foundation, things like that. The individual, innovators, sometimes, the government system, it's difficult to fund them because of your own financial and other things, issues coming up. And because then we ask them to tie to the university or some such thing and to try to do that. But in a formally, yes, I think we are way ahead in lab to land and lab to lab also. But I think, as you said, I think we need to do a bit more in terms of frugal and innovative inventions, and we need to support them and we need to identify them. I think that to a certain way it's going on. Probably we need to shoulder it better. Could be done better. Yes, agreed. Yeah, actually, sir, this is a lesson that we have concluded in the sense from the previous sessions of Techneev. Like there are solutions that are there in the community, but probably we haven't looked them from a STI for the inclusion point of view, that we could do a little bit of the formal knowledge that we already have with the SNT organizations or the field organization as well, and we could just formalize it into a way that it could go for the TRL, like we have a TRL level. So maybe they were not in the initial levels of the incubation and all, but with the SNT organization they can go up the ladder and form a sustainable market, like a technology that could sustain in the market for some solution. So that is the probably the thing that we are just precipitating come out of this especially this program. So we hope that the system comes into practice and we see more and more inclusive society, in the sense that both the scientific staff and the non-scientific, the so-called non-scientific staff work in synchron to get a probable and innovative solution of any problem that we face today. So thank you so much, sir, for your comments and suggestions. We hopefully look that this State SNT Council, the Karnataka State SNT Council, their policy and their model of inclusion of the local support, local innovators, that can be replicated by the other states as well, and other local organization as well, in the sense that at their level. So we hope that this model gets replicated and we see more and more local innovators coming up front. So with this, we invite the next panelist, Dr. Nasir Hamid Masoodi, sir. He is the senior scientist
also faculty in the horticulture SQST, Jammu and Kashmir, and he is a very well-known scientist in the field of floriculture, landscaping, and commercial cultivation of medicinal and aromatic crops. And for the socio-economic upliftment of the youth, especially the unemployed youth and the scheduled tribes of Kashmir, he has played a key role in the capacity building and then entrepreneurship development of the youth. Important assignment for which he has received various appreciation include the consultancy services at the NDMC, the New Delhi Municipal Corporation, who were able to take up the growing of the various flowers, especially the temperature bulbous crops in the vicinity of Delhi. And besides that, he has also received appreciation from the Indian Army. We invite you, sir, on board for your valuable comments. Thank you very much, ma'am. Sir, can you please turn on your camera? Right. Am Thank audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you, Ms. Tosha from Vigyan Prasar, for giving me a chance to deliver something and to share my ideas. Regarding, I have gone through many presentations here, some important lectures were there, and they are sharing ideas. And in that case, what I concluded, I have worked from 2002, I am working with tribals and rural communities. And this recalled me the scenario when we were searching for the livelihood security of scheduled tribes of different parts of India. So in that case, we have worked in Chhattisgarh, in J&K, in Himachal and other parts of the country. So what we conclude out of that context and out of this today's beautiful session, it is that basically when we jump in some area, we have to see 2-3 things. One is we must know our capacity. We must know where is the vulnerability. Why we must know the risk factor. Basically, these 3 things are very important to understand to all of us, because we just we are doing, for example, scheduled tribe upliftment or scheduled caste upliftment or something else. There are slum people, basically they don't have knowledge, the educated people are very less in that case. So there was that some people they interacted with, I think some person was a Port Blair. The gentleman was telling about the importance of information system and all those things. Similarly, Dr. Mohammed Tufail, he gave some idea about the wool industry and all those things. But I would suggest one thing, that when we are going in, we have to look for this matter, that the industries, our vision should be very much clear, that what industries are doing, how they are progressing, how they are earning, how they are collaborating. Similar model we should look for our scheduled tribes, they are very much poor and they don't have resources as well. Second very important thing is we have to look for the niche areas. For example, if we are living in J&K context, here they are basically nomads. So we have to try our level best that their nomadic pattern should change into a sustainable livelihood development. That's very important. Basically, they are moving, their children are moving, they have schools along with them, and at the end of the day, their children, they are unable to study for a longer period of time or for higher studies. In that case, we have to do capacity building of how we can do that. That's very important question. For example, we have to see what we are importing. For example, we are importing horticulture plant material from European country worth that is in thousands of crores. So can't we things? For example, they are living in that context. They are living in tribal area like in Chhattisgarh, Barnawa Wildlife Sanctuary, Basra, and like in Madhya Pradesh, other parts, Amarkantak, and like Andhra Pradesh, Chittapuli, we have. In J&K, we have different states, like Northeast. So they are basically rich in floral wealth. So we have to educate them for value addition of those products, which can have a specific name. They should have a branding in terms of tribals so that they can earn better. So we have to see niche areas in different parts of the country so that we can have a good conclusion. Neither we just go for scheduled tribe hub somewhere
and it is amalgam of things. At the end of the 2 years, you will go, they will find nothing. Because in scheduled tribe plan, what we do, we give them maize seeds, rice seeds, and all those things. And after 2 years, you will find nothing there. So what is practical applicability is that our vision, our mission should be very much clear. Second thing, sample size. For example, we are targeting one gentleman, Dr. Muhammad Tufail was delivering, and similarly, there was that from Port Blair, Dr. was delivering to us, and similarly, there was first one that weaving of that car, that it was there. So our sample size, we are taking, we have around 12% of population of tribals in Kashmir, 11.9%. Similarly in Northeast, similarly in Chhattisgarh, we are taking only few 12 villages, 150 people, 120 people. Can we resolve the problem? No. Basically, our motto should be to establish a system that is in terms of FPOs, foreign produce organizations. We should link with the different schemes are there. Some funding has to be managed from MIDH, from RKVY, from different NHB, from SFAC. There are a lot of agencies which are working for tribal upliftment or social upliftment. We have to educate them how they can transform their, how they can be organized in their approach of this what they are doing farming. They knew around 30 to 52% are cultivators there if you are taking national scenario of these tribals. So how they can work in an organized way, how they can improve their livelihood through different systems, that is the basically need of the hour we have to understand. We must understand there basically what exactly we have there, how we can improve their socio-economic development. It is not only we are working on the economic, socio-economic development. So we have to delineate first their capacity, niche areas, area-wise expansion, then value addition, and then market linkage is very important. And this linkage is scheme so that neither we are investing on them, we are doing capacity building. At the end of the day, we are doing, I'm just applying to me first. We are doing photography that we have conducted 50 programs, 100 programs, 1,000 programs. At the end of the day, we'll go there after 2-3 years, there's nothing. So this submission suggestion is that our for livelihood security, we have to eliminate niche areas, and where our sample size should be effective to control the masses, and that should be the guideline for them. They should learn out of it. They should get some benefit out of it. These are some of the opinions after working with in different sectors. So if any queries, kindly interact with me. This is only an interaction session. It's a very big topic. It needs a bioresource management itself, a big topic. So please. So we understand that the major issue that you have like put forward is that there is no interlinking of the capacity, like whatever technology is developed, there is no interlinking of that with the industry. So that when we develop, like if we train for a sample size of people in a certain project, if they're connected to the main industry or they're streamlined to the main industry and they are told how to go about it in a sustainable way, so that interlinking of the people from even the backward linkages, like how to get the raw material and all to get the product, and also the forward linkages. So this hanging in between of the people, that they have got the capacity but they do not know how to implement it unless and until an SNT organization intervenes and then they tell them the right path to go about it. So the main capacity building that we have already given them is the scientific one, but they also need the linkages one, and also at the financial front. And clustering approach very important. Yes, the cluster approach, or any way they can link with the main supply and demand chain of the local livelihood system. So that is the main important issue that we are facing right now. So many this STI policy as well, and many solutions that are probably given to this problem is that why can't we just only focus on the
capacity building, we also focus on the awareness part of this. Like while giving them the capacity building for the scientific part, we can also propose them how to go about the business, preparing the business model, and how to go about the linkages part. So this model, is this model very common? Have you seen in this model upcoming in the some of the projects, or there are some initiatives at the government level, either at the state level or the central level, that could be proposed from through this platform, that this linkages is very important and you can go about it through this? Yeah. Basically, what we have to first, what should be our approach? We have a scheme, full-fledged scheme, FPOs, foreign to the organizations. We can club all of them in that scheme. That will be one. Second is that for tribal upliftment, we have different schemes, and they are not knowing it. Awareness is very important. Third is we are working on that. I have worked clusters somewhere. They are working now. They are working on the industrial pattern. So I have a project of DST, and after 2 years, you will see they are connected to market and they are selling produce. Per capita income, for example, it is 2,000 rupees they are earning by cultivating maize. It is only 200 from 500 meter square area. So it is less than average. What our intervention should be, how it can be 30,000. That should be our intervention. And it depends from area to area, we have to eliminate that. And there are some models we have developed. I have developed at different places. I can share it with you during my presentation whenever you will give me a chance. So I will show you how we have connected these tribals to markets and what niche areas they have captured. So that is very important that in every state and in every union territory, we have a scheduled tribe program. We have scheduled tribe associations. We have government-sponsored schemes. So I'm very sorry to say, only meetings are being conducted and photographs and that media and all those things. But actually, what is the motto that we are lacking? So we should accept that we are at some weaknesses there, which we have to rectify so that our organized sector can be developed. It can be an organized business. So that is from my side, and some models I can share with you, which are very important. Sir, in this aspect, there is also a cooperative in the networking field organization that work at the field to bring in the local people and connect them to the mainstream. So, do we propose here what is the possible role that these networking organizations can play, like the KVKs? The KVKs are the part of the main SNT organization system as well, and also they are in the vicinity of the farmers. Yeah, so these are some probable solutions that probable organization that could be roped in. My first word was sustainable development. I mean to say you have to fix responsibility on the KVK, on the government organization line departments, that after 2 years of this implementing program, there should be some at least 20-30% progress in linkage. It is not only that you have concluded this type of this year that schedule, and next year you will train more 100 people and you will forget those 100 which were earlier trained or every or there were. That means KVK, we have to fix responsibility on KVK and line departments as well as stakeholders who are involved in that. That if you are doing it, give us the practical utility, and farmers or scheduled tribes should talk themselves that we are being facilitated by them and we are earning this much. Not that we will give script and they will demonstrate that. That is very important. Basically, people should come to you by your work. If we are going there, we are just KVK or some line department, I'm also working. We are following them, we are getting some 30-50 people and we are awaiting them. That is not responsibility. We have to fix the responsibility on KVK, the line department institutions, that if we are providing this much of fund for this purpose, our output should be clear cut within 2 years, within 1 year. There should be a sustainable development. Not only that we have trained them, capacity building is done. After New Year, there is a new plan, their new money will come. We will go ahead with that. So that our motto, we should be clear cut about our duty, that we have to train them, we have to link them with market.
If we are in a capacity to do it, we should accept the challenge. If not, one should not jump in that field, because this is called a sort of then I may say this is dissing with our community. We are looking for the social upliftment, and this gives a reverse effect. So in that case, we should have an accountability system where we can analyze that yes, we have invested this much of money, government has given this much of money, and people are working and they are earning out of this, and people are happy. They are coming in the platform, they are talking about you, they are success. We are game changers, we are changers, and all those things. That it is not only, for example, I was expecting few people to join us from as per your schedule. So they are not. There should be a system that they should have come. They should have themselves voluntarily come, leaving aside all the works. That we have to interact, we have to tell our success story. That means this is bitter word, but you have to bear with me in that context. So you have to bear with me and all the participants. Basically, they should come on the platform and tell us this. I can show you some success stories of my some colleagues. People come to them that you are demonstrating. So that approach should be, we have to fix the responsibility, and we have to fix this not only in institution, also on this S&T councils, also on the funding agencies, also on the stakeholders involved, and also on the which are implementing it. The stakeholders are equally responsible, like we are responsible. So this is how we can progress. If we are not fixing responsibility on people, on the stakeholders, our all whatever we are doing, it is in vain, and it is. You see, I will give an example. There is Flora Hollanda was one society in NGO. It started in 1910 in Europe, Netherlands. Netherlands is called Netherlands because there is no land. It is beneath the sea level. So they have canal system. And that society started that one intervention that we will only propagate plants. And small society in this era of time, it's now 43% of the economy of Netherlands comes from that venture which has been started by 1910 by an NGO. And that is $60 billion to trade. So we have to think big so that we can concise somewhere in the middle. So if we are thinking only in middle, we can't think of big. So we have to just motivate ourselves that if Netherlands can do it, we have more resources than them. If Europe can do it, why can't we do it? So why and when and how? These are the three questions we have to keep in mind so that we can be in a progressive mode. Neither we will go on conducting meetings, survey reports, and all those. It is not only in one sector, across. So that in that way, I may say that we should fix responsibility on us and on all the stakeholders. And my sincere request is, wherever we are funding, we must see the sample size should be very big. Target population should be very big so the output will be good. Neither covering 2, 3, 10 villages, it's not. In my opinion, this is not advisable for a livelihood security or sustainable development. That's my opinion. That's In that case, what we can conclude is that the the measurement scale of any scheme or any project can be changed to not from a welfare point of view, but to a development point of view. That how much development has been there in the community due to the existence of any project or any funding that has been given to any organization. right. So that the measurement scale, if the measurement scale has been changed from the welfare system to the some development system, we can see the things moving in, and we can see a sustainable development in the system, so that the people get the capacity, required capacity for the scientific intervention as well as for the financial support, and mainstreaming them to the main chain that goes on around the world and the country, like even in the region, the local supply chain can also be affected. Like they should be in the mainstream of the local supply chain as well. Even I may intervene for a second. Yes, sir. Yes, sir. There should be today. I visited different parts of this Kashmir for tribal upliftment, and I went last village that's called Titwal. After that, there is a border area. There's nothing.
They have smartphones. They know how to use smartphones. They can be made aware how you can go for marketing through smartphones. Is one. If China can do, they can sell their 1 kg of honey in 20,000 rupees. Why can't we sell our produce at high rates? Because it's all branding and all value addition, all the marketing. So marketing strategies we have to demonstrate to them, and rest only the compiling reports will not work. That's all about from my side. Thank you so much, sir. And like as always, we have also got many probable solutions to the problems that we face in day-to-day life, and as well in the system. Like there's a systemic gap in how to implementing a project to how to describe a project, like to how to nurture a project and how to initiate a project. So many problems were addressed through the session, and Dr. Tufail sir would not be joining as there's some systemic issue with him at his end. So with this, we conclude today's session and Thank also you. today's day 24th of Techneev. As is the thing, the day, just a second, sir. In place of Tufail sir, we have SR Azad sir with us. Welcome on board, sir. SR Azad sir, can you hear us? Hi. Yes, yes, I hear. Yeah, Yeah. yeah. Welcome, sir, on board. And Yeah. for you have been there in the field for implementing a project. आपने एक project implement करके काफी चीजें आपने challenges face किए होंगे और उसके आपने probable solutions भी अपने level पे किए होंगे. तो सर basically Yes. हमारा question ये है कि जैसे communities को आपने कैसे train करा कि वो technologies को absorb कर लें, उनको अडेप्ट कर लें और वो उसको आगे भी यूज करें. तो क्या Yes. चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे प्रिपेयर करा कि वो इस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करें? सर, इफ इट इज Yes. पॉसिबल फॉर यू, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? Yeah, yeah, sure. Actually, I am on the way to I am my vehicle is outside roadside. We are staying. Actually, your question is very well taken. Every organization, if working in the technology implementation, particularly in rural areas, and not only in the rural area, especially special reference to tribal people, it is very challenging. They don't have the much exposure to the other things and new technologies or what is going on in the agriculture and other sector. So because of that reason, we have started the first activity in the tribal primitive tribes of Bharia. They are very primitive kind of people. They don't have the much education. Only they dependent in the day-to-day livelihood demand from the forest and small agriculture practices. So we have started first in this area ki how they are living in this remote area, no very much connected with the other places. So we have live with them and our team will working together and what they have the problem where basically need assessment is very important for the people. If you don't have the understanding about the need of the local people, we can't give the proper solution as per the need. तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि हम उनके बीच में रह करके हमने काफी समय तक उनके साथ दूसरी चीजों पे काम किया. तब हमें समझ में आया कि कैसे हम जो है उनके लिए क्या काम कर सकते हैं. तो उनकी प्रॉब्लम कहाँ पर है टेक्नोलॉजी की, जहाँ उनको कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने में टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से उनको बता सकते हैं. तो वो बेसिक हमारी अप्रोच रही है कि हम कुछ भी अपनी टेक्नोलॉजी सोच करके हमने कभी भी वहां पर कोई काम नहीं किया. जैसे एनटीपी इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द नॉट प्रॉब्लम इज द इशू ऑफ दैट एरिया. The proper pricing and proper not getting proper price, and so then we started where is the lacuna, what is the problem they are facing. So basically two major problem in that time we are they are not getting proper price one side, another is a proper weight gaining.
They go to the market or hut or some broker come to the village. That time they just रॉ मटेरियल जो भी उनके पास होता था फॉरेस्ट जो कलेक्शन करते थे, चाहे वो महुआ हो, चाहे हर्रा हो, बैड़ा हो, आंवला हो, बेल, वट एवर इन द फॉरेस्ट दे हैव, तो उसको ला करके जब वो बेचते थे तो वो पहली चीज तो उसको जो है प्रॉपर प्राइस नहीं दे रहा है, दूसरा जब वेट कर रहा है तो वेट करने के टाइम वो उसको जो है तराजू पे तेजी से पटक देता है और बोलता है 10 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, और उसका कुछ पैसा उसको दे देता है। तो ये क्या है कि वेट में भी वो पैसा उसको क्या बोलते चिट करता है, पैसे देने में भी चिट करता है। तो हमको समझ में आया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हमने इंटरवीन किया कि पहले तो हम वैल्यू एडिशन की बात करें कि वो अपने लेवल पे कुछ प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो कौन सी ऐसी चीज है उस एरिया में जिसका का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो है आउटसाइड डिमांड है। तो हमने आंवला है, सपोज महुआ है, इसको प्रॉपर अगर ड्राइंग कर दें, प्रॉपर अगर क्या बोलते हैं इसको स्टोर कर दें और उसके बाद उसको कुछ समय स्टोर करने के बाद अगर बेचते हैं तो उसकी वैल्यू जो है इन कंपेरिजन टू क्या है रॉ फॉर्म कई गुना बढ़ जाती है, जैसे 2 से 3 गुना जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर वो 2 से 3 महीने अगर स्टोर करने की क्षमता ग्रुप में अगर आ जाती है तो उसकी कीमत 4 गुना तक भी उसको मिलती है। तो ये जो प्रोसीजर था हम की उनकी प्रॉब्लम को असेस करना, उसके बाद जो है उसको क्या टेक्नोलॉजी वहां पर इंटरवेन कर सकते हैं, तो हमने कलेक्शन मेथड को चेंज किया, हार्वेस्टिंग मेथड को चेंज किया और उसमें हमने टेक्नोलॉजी इंटरवीन की। ड्राइंग इज मच important for the area because so many products available in the forest but properly they are not properly drying, तो उसके कारण जो है बहुत बड़ा लॉस जो है उसमें हो जाता है और उसकी प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आंवले को प्रॉपरली हार्वेस्ट करने के बाद उसको कैसे ड्राई करना है और कितना ड्राई करना है और उसको कैसे स्टोर करना है, हमने ये उनको ट्रेन किया। तो जब अगर ब्राउन कलर जो है लाइट ब्राउन कलर में ड्राई होने के बाद उसका कलर अगर आता है तो वो आपका बाहर मार्केट में उसकी कीमत जो है आपका 200 से 300 रुपए मिल जाती है, लेकिन लोकली वो 30 से 40 रुपए में ब्लैक ड्राइंग एकदम उसको यूं ही ड्राई कर दिया, काला हो गया, फंगस ग्रो हो गया, तो उसकी कीमत उसको 20-25 रुपए तक ही उसको मिल पाती है, 30 अभी लगभग 40 रुपए तक उसको मिल पाती है। तो ये डिफरेंस जो है आपका वैल्यू एडिशन में प्रॉपरली अगर हम टेक्नोलॉजी इंटरवीन करते हैं तो उससे ये एक फायदा उनको मिलता है। सपोज एक एग्जांपल और, चिरौंजी बहुत अवेलेबल है हमारे फॉरेस्ट एरिया में, तो जिन एरिया में हम काम करते हैं वहाँ चिरौंजी जो है आपका ड्राई फ्रूट है, तो अचार जो है प्लांट का नाम है, वो उसमें जो है ये निकलता है। तो हमें लगा कि उसमें अगर वैल्यू एडिशन कर दे तो उसको डिकॉटिकेट अगर करके लेके जाए तो ज्यादा उसको फायदा मिल सकता है। तो हमने डिकॉटिकेशन फिर मशीन डिजाइन की कि वो गांव के लेवल पे कौन सी मशीन जो है वो आसानी से काम कर सकती है मिनिमम मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट से। तो वैसी एक डिजाइन आपका हमने की जो कि 2 HP मोटर, एक 1 HP मोटर से वो चलाई जा सकती है और डिकॉटिकेट करके उसको बेच सकते हैं। तो ये इस तरह से टेक्नोलॉजीज आई। आपका एक और टेक्नोलॉजी के बारे में एग्जांपल दूंगा कि टेक्नोलॉजी कैसे हम एक बार गांव में मेरे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो हम जिस घर में भी जा रहे थे वहां पर वो लोग कुछ कूटने में लगे हुए थे। हमने पूछा क्या है ये, तो ये माइनर मिलेट, खासतौर पे कुटकी जो है उस एरिया में बहुत होती है, तो माइनर मिलेट कूटने में लगे हुए सभी लोग, तो किसी से बात नहीं हो पा रही। तो हमने पता किया, मालूम करने में ये मालूम चला कि वो वहां पे किसी लड़के की शादी है गाँव में, तो गाँव के लोगों को जहाँ लड़की शादी हो रही होती है उसको 1 क्विंटल जो है आपका कोदो चावल देना पड़ता, कुटकी का चावल देना पड़ता है, उसके लिए उसकी कुटाई चल रही है। तो जब हमने महिलाओं से डिस्कस किया तो पता चला कि बहुत लेबोरियस एंड टाइम टेकन वो आपका एक्टिविटी थी और काफी उसमें जो है आपका ट्रेजरी जो है महिलाओं की लगी हुई थी। तो फिर हमने वहां से जो है सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या हो सकता है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो फिर हमने उनकी ही प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करके जो है हमने एक मशीन डिजाइन करी जिसमें कि इसको जो है आपका कोदो कुटकी को जो है आपका इजीली जो है डी हस्किंग कर सकते हैं, तो चावल निकल आता है, उसको इजीली जो है आपका वो मार्केट में या अपने घर में जहाँ भी इस्तेमाल करना कर सकते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी वहां पर जरूरत है वो उनकी नीड पर डिपेंड होगी, तो वो एक्सेप्टेबल होगी और लोग उसको पसंद करेंगे। तो इस अप्रोच से हमने वहां पर चीजों को करने की कोशिश की है। तो ये, और वो लगातार उस एरिया में उनका इंटीग्रेटेड एक प्लान होना चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि हम एक टेक्नोलॉजी को या एक एक्टिविटी को लेके गए और फिर उसके बाद करके सक्सेस अनसक्सेस करके हम उसको वापस आ जाए। तो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आया उस प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी अप्रोच ये है कि एक ऐसा क्लस्टर आइडेंटिफाई करें जहां पर आप लंबे समय तक उनको
टोटलिटी में डेवलपमेंट का उनको कंसेप्चुअल फ्रेम के साथ उनको आगे लेके जाए। तो वहां पर चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे एजुकेशन में कुछ करने हैं या हेल्थ रिलेटेड कुछ करना है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात है या न्यूट्रिशन की बात है, ये सारी चीजों को एक साथ आपका क्रमबद्ध तरीके से एड्रेस करेंगे तो शायद उस कम्युनिटी में तब्दीली लाई जा सकती है। और वही तब्दीली जो है ये बारिया ट्राइब्स में पातालकोट के एरिया में हमारे इंटरवेंशन से दिखाई पड़ती है। तो ये एक अचीवमेंट है कि अगर हम ग्रास रूट लेवल से प्लान करेंगे और उनके ही साथ बैठ के प्लान करके आगे जाएंगे तो हमें क्या इशू लेके जाना है, क्या टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए, वो सारे सॉल्यूशंस भी उनके पास से मिलते हैं। सिर्फ हमें उसको सिस्टमेटाइज करना है, उस टेक्नोलॉजी को आपका डेवलप करने में हम फिर काम कर सकते हैं और वो फिर इम्प्लीमेंट होगी। तो वो उनका आइडिया होता है, उनको ये एहसास कराने की कोशिश हम करते हैं कि आपके आइडिया पे ही ये चीज हमने खड़ी की है, तो वो फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी काफी अच्छी पड़ती है। तो इस तरह से हमने उन चैलेंजेस को जो हमारे सामने में आए उनको हमने इस तरह से डील करने की कोशिश की है। तो कुछ हद तक हमको उसमें जो है फायदा जो है हमें सफलता मिली है और आज हम उस एरिया में काफी हमारी पहचान, लोगों के बीच हमारी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है हमारी टीम की। तो हम जो भी प्रोग्राम वहाँ लेके जाते हैं तो वो हमारी शुरुआती दौर पे हमें संदिग्ध नजरों से नहीं देखते हैं, तो हम उनके साथ लगातार संवाद आगे भी बनाए रखते हैं। तो इसके कारण आज हमारी वहाँ पर पूछ परख होती रहती है। तो ये बेसिकली है और रेगुलर हमारे सेंटरों में, हमारे गांव की मीटिंगों में वो शिरकत करते हैं और अलग अलग इश्यूज पे हम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे वहाँ के बारे में, हमारे एरिया के बारे में ये कॉमन हमारा जो है आपका अप्रोच है जिसकी वजह से हम वहाँ पर कुछ करने में सफल हो पा रहे हैं। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड ये जो प्रोसेस है नीड असेसमेंट की और अपनी सोसाइटी को इंक्लूड करने की अपने पूरे डिसीजन प्रोसेस में और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो कि मुझे लगता है कि सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना चाहिए ताकि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ सके सोसाइटी में, क्योंकि उन्हीं की प्रॉब्लम और उन्हीं का अगर सोल्यूशन उन्हीं के पास उसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके जाते हैं तो शायद जल्दी जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके मॉडल से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसका पेनिट्रेट जी उसके आउटपुट्स भी बहुत जल्दी हमें और इफेक्टिव आउटपुट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये मॉडल इज वर्थ रेप्लिकेटिंग और इस टेक्नीव प्रोग्राम से हम लोग इन्हीं मॉडल्स की सराहना करते हैं और इनकी अपेक्षा करते हैं कि वो हम तक आए और हम उन मॉडल्स को रेप्लिकेट करने के लिए एक सिस्टमिक प्रोसीजर बना सके, एक रोड मैप बना सके कि किस तरीके से आगे लोकल इनोवेशन को आगे ले जाया जा सके। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम के कंक्लूजन में आते हैं। धन्यवाद सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि हमारा डे 24 था, यानी कि लास्ट डे हमारा बहुत जल्द आपके सामने हम डेट डिस्क्लोज होगा and it would be kind of a grand finale in the sense क्योंकि हम 75 hours of this long run of initiating और ये सब पूरी प्रोसेस का एक लास्ट कंक्लूजन होने वाला है और जल्द ही जिस पूरी प्रोसेस में जितने हमें मॉडल्स और सॉल्यूशंस मिले हैं, जितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिली हैं, इनके भी हम आउटपुट्स आप तक ले आएंगे। तो इन सब के लिए हमसे जुड़े रहिए और ISTI पोर्टल को देखते रहिए। धन्यवाद।